हेलो, नमस्ते सर। डॉक्टर नमस्कार। भार्गव बोला था सर। कौन? डॉक्टर भार्गव सर, आज वेबिनार रखा था अपने 7 से 9 वाला टाइम था, तो जब भी आपको समय मिले तो सर आप ज्वाइन हो जाइएगा। आप म्यूट कीजिए अखिलेश जी, अपना माइक म्यूट जी सर, कीजिए। मैं मनीष जी को ही फोन कर प्लीज म्यूट योर माइक। अखिलेश, डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी, 450 भी नहीं दे रहा है। अपना माइक म्यूट कीजिए। 2 घंटा थोड़ी ना वो सब हम मंगा के देंगे, होगा So now फोन कर देंगे आप। I would like to welcome you all on AYUSH SAMRIDDHI platform. Due to your cooperation, guidance, and blessings, our journey is now reaching towards number of 500. Thank you very much for joining. As we all know, we are daily celebrating our everyday with Ayurveda or AYUSH, and unable to invite you with a long notice. So really I am grateful to all the speakers, right from Priyadarshini ji, Chandra ji, Dr. Rajesh Kumar ji. Every expert is precious. In our mythology, Dattatreya ji had 24 gurus. Fortunately, I am really feeling myself fortunate enough that due to these webinars in 2.5 years, I have been able to learn from approximately 2,400 gurus, and really I am grateful to all. Thank you very much. Without wasting much time, I would like to invite Professor Vishnu Prasad Sharma ji, President Vishwa Ayurveda Parishad Assam, ex-principal Guwahati Ayurvedic College. Welcome sir, member NCISM. Welcome sir, Swagatam. Okay, namaskar. Good evening to everybody. Respected Professor V.K. Agnihotra ji, respected Dr. Pawan Kumar Sharma ji, eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on AYUSH-based cancer care. So in this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. P. Hemant Kumar, Professor and Head Department of Soil Law, NIA, Jaipur. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Rajesh Karan, medical oncologist from Indore. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. KCP Guno Ratne, consultant surgeon from Sri Lanka. Welcome you, madam. Dr. Monish Parma, radiation oncologist from Indore, MGM Medical College. I welcome you, sir. Next, I want to welcome Bodho Navin Gupta, Ayurveda Sajja from London, UK. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Hemchandra Jha, Associate Professor, Department of Biosciences and Biomedical Engineering, IIT Indore. Welcome you, sir. Next, I want to welcome speaker, eminent speaker, Dr. Rajesh Kanwar, Ayurveda specialist from California, USA. I welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Akhilesh Bhargava, Professor and Head, Department of Soil Law, Ashtanga Ayurveda College, Chairman, Ayurveda Cancer Foundation, Indore. I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on important subject. AYUSH-based cancer care, most important subject, and Ayurveda shows very good result regarding cancer diseases. Yes, we can increase the lifespan also. Let's hear from the eminent speaker. So once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this
evening webinar on IRES-based cancer care. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you very much, sir. Thank you very much for your kind blessings. In my opinion, sir, cancer has maximum percentage in palliative care. Unfortunately, non-treatable cancers, patients are more in palliative care. In our Ayurvedic colleges, the number of patients, IPD patients, are in comparison to less than allopathy comparatively. Why can't our Yes. Ayurveda be a best therapy? Because all cancer patients generally are being treated with addictive, this morphine or any similar product to keep them alive without pain. So it is very unfortunate situation. So today's subject is very great and very impactful also on the society. What we are doing, how this cancer is being generated, how we can prevent it, and how we can treat through Ayurveda as supportive therapy or as a standalone therapy. This is the need of the era today for treatment also, for patient also, and for Ayurvedic hospitals also. In my opinion, every Ayurvedic hospital should have a ward for palliative care in which cancer patients will be more. It is my opinion. I would like to request, before calling Dr. Akhilesh Bhargavji, today's Sutradhar and Karandhar, maximum cancer specialists, cancer experts have been introduced today by Dr. Akhilesh Bhargav. I am grateful to him. I would like to invite Professor Dr. V.K. Agnihotri for his initial blessings. Namaskar. Thank you, Dr. Samriddhi, and all the dignitaries who have just joined. My very humble request to all the listeners, that those who are not speaking right now, they are supposed to mute their mics so that there should be added sound be controlled. So the disturbing sound should not be there. Then only we will be in position to listen all the good informations which is being given by today's guest speakers. Our guest speakers are in 7 to 8 in number. So we are thrilled that how much we are going to know more and more about the cancer. We all know that its name itself is a dreadful, and it amounts a lot of, say, dent in our mental status, that if we just come to know that any person is being diagnosed with a cancer or tumor, it itself gives a sort of shock that now what will happen, what will be the remedy, what will be the financial status, how is that family's social status be secured and all that. So as far as the palliative care is concerned, that is only the way to be given some consolence as far as to console them regarding the painful condition or the say suffering family. So today it's not our time to speak, it's the time to our guest speakers to speak and pour their knowledge with their wide experience to this platform, so that we will be in position to help any person who come across us regarding some sort of help suffering from the cancer of any part of the body. So with these words, we wish a very good success of today's webinar, and we do hope that our guest speakers with their distinguished and elaborate knowledge is going to be benefited to us all. Thank you so much. Over to Dr. Pawan Sharma. Thank you, thank you, thank you. I would like to welcome after a long time ईद का चांद, चौदहवीं का चांद मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। ईद का चौदहवीं का ईद का चांद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। I would like to welcome Professor Madan Thangvelu sir. Welcome. Warm welcome. He was on Europe tour, complete Europe tour. Welcome sir. So many countries. अग्निहोत्री जी प्रणाम जी। सर प्रणाम सर प्रणाम। पांडे जी प्रणाम जी। Sir, today's topic is cancer, sir. Very important topic, Pawan ji. I just want to
I heard Agnihotri ji thoda sa ki there is a very big event coming in Vagoli in Pune. Many of you will know about this. It's the 6th Ayurveda for Cancer conference. So it's very important that everybody interested in the cancer area and Ayurveda should know about this. इसमें पवन जी अगर थोड़ा सा इजाजत दें कि आपकी वो web share, if you will permit me, then You are co-host, sir. Acha ji. Now, so I just want to share the information about the conference. Many of you may know about it, and many of you will know about this institution in Vagoli. It is here on my shared screen, and it is Bharat Sanskrit Darshan Trust's Integrated Cancer Treatment and Research Center. And it's not far from Pune. Vagoli is very near. Acha, yahan pe, I just want then to share details of the conference that is coming up there. And finally, I want to share, if I may, Pawanji, just one paper that has come out recently from Vagoli. It is one of the best papers I have seen till now about integrated Ayurvedic treatment of cancer on a triple negative breast cancer patient and 10-year disease-free survival of this patient. अब इसमें खासियत क्या है कि इसमें पूरा वो प्रोटोकॉल दे रखा कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और औषधियां कौन-कौन से दिया, कब दिया और what is the चिकित्सा सूत्र for this cancer case. And this is very, very important for all of us, because when we go into that space of Ayurveda or for treatment of any condition, particularly for cancer, there is a lot of criticism, and that criticism sometimes is welcome. Constructive criticism is always welcome, but sometimes there is a lot of criticism that comes from a poor understanding of the principles of Ayurveda and how it is used in cancer. So, Pawanji, if my screen is visible, this is the paper. Or is paper ki andar, I will just quickly share my screen just to highlight a few points in the paper. And it's available online. I will put the link on the chat box. The title is very simple, and it appears in Current Research in Complementary Alternative Medicine, and the senior author is Sardesh Mukji, and the title is Long-Term Progression-Free Survival of Stage 4 Triple Negative Breast Cancer Patient having genetic mutation, etc., and a case report emphasizing the role of Ayurvedic treatment. Acha, isme I will show you just, I won't go into any of these details, but I want to show you this table here. The treatment followed, the protocols, and the duration of the treatments, that which medicines were used, or Anupan, etc., 2 years, 7 months was the formulation that was used, and so on. Then for 1 year, 8 months, another combination, and so on. The very detailed protocol, the aushadhis and where it is made is also highlighted. Acha, isme dusri cheez, very clear presentation, is the number of bastis, nasyas, shirodhara, shiropichu, and different karmas that were used in this procedure, all the way for 10 years, from January 2012 to February 2022. Very detailed. Acha, isme aage kafi kuch detailed. They've given very many details in here: periodic clinical, radiological, hematological, biochemical evaluation of the patient. So I will leave it for all of you to
study this paper. This kind of documentation is very important for us. Medicines and their constituents, Atharva Swarna Basmadi Vati, or so many other formulations, simple ones, Triphala Gugulu, etc., etc. So you can see the extensive documentation that has been done. From here, we can learn many things about Ayurvedic procedures. Agnihotriji, I'll chat box में I'll put the अगर paper भी डाल दें या link डाल दूं आपके लिए. सर आपकी स्क्रीन चेंज कीजिए, पुरानी स्क्रीन है. अच्छा जी, अच्छा, सॉरी. अच्छा, इसमें तो हमारी तरफ से खाली एक, पवन जी, एक स्क्रीन शेयर और अगर आप, if you will permit me. Sure. ये हमारी कैंसर वाली Vagoli cancer, so that it gets registered for people who are either watching us online or people who may want to follow the details here. It is available at this link here. If you just go 6th International Conference on Ayurveda for Cancer. It is on the 9th, 10th, and 11th of December this year. And it starts in about 31 days. And you can see all the details of these conferences. And I think also some details about the sessions. And the most important call is there is a need of a common platform where the worldwide experts working in the field of cancer can come together, and the topics that are going to be discussed and all those details. Here is a section on Ayurvedic medicines and the speakers who will be there, a long list of speakers who are there. You will recognize many of these people here. Balanduji is there, etc., etc. So this is, once again, the website can be accessed by Googling 6th International Conference on Ayurveda for Cancer. So there is a lot of activity around the world in terms of Ayurveda for cancer. And how can we engage with that space and make more people aware of the work that is going on in the cancer area? The importance of an international conference where people from around the world can come and learn about Ayurveda, or what is the future? And for me, that paper that is there is very important. Right. I put the document. Thank you. So I will finish here, Pavanji. I'm happy that you are bringing us all together once again on the 485th webinar. Thanks to Agnihotriji. My apologies for not being with you people, because in between we had Ayurveda Day celebrations that was going on in many places. And then there is ongoing activity too. So my apologies for not being with all of you here. Namaskar ji, Pavanji. So now I would like to hand over the mic to Dr. Akhilesh Bhargav. He is leading Ayurvedic practitioner for cancer in Indore, #1. He is behind all recent drug de-addiction movements also. So I am really grateful to him also. As younger brother even, he has supported for this webinar. He has introduced all the dignitaries, except only Priyadarshini ji and our Naveen ji, all dignitaries. So I am really grateful to all dignitaries and as well as Dr. Akhilesh Bhargav. Now stage is yours, Dr. Akhilesh ji. We would like to call speakers as per the sequence. Okay. Thank you, sir. First of all, I am congratulate to all of you on the question of National Cancer Awareness Day. ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और आज इसकी आवश्यकता इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नॉन इन्फेक्शनल डिजीज है उनसे पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु होती है, और उसमें से लगभग यदि हम देखें तो 8 मिलियन लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु भारत में हो रही है, और कैंसर से, केवल कैंसर से 8.17%। इसका मतलब यदि मान ले तो 10 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष कैंसर से होती है। तो एक गंभीर बीमारी और दिनों दिन इसके प्रभाव हमारे समाज में देखे जा रहे हैं। लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है,
इसी विषय में हम सभी आए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, एज वेल एज एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड ऑल टाइप ऑफ थेरेपीज। हमारा एक ही उद्देश्य है, टू सर्व द पेशेंट। और जैसा कि आयुर्वेद में ही बताया गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने, क्योंकि सीक्वेंस की बात आपने की है स्पीकर्स को बुलाने की, तो कुछ जो स्पीकर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। कुछ बिजी हैं आज, कुछ ऑपरेशंस में है, तो मैं जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में है डॉक्टर राकेश तारण। ही इज अ फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ मिड इंडिया और अनेक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और इंदौर शहर में एक बड़ा नाम है कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। और आपका एक तारण ऑन्को केयर सेंटर है जो रोगियों की सेवा करता है, एंड इट इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर पेशेंट, एज वेल chemotherapy, radiotherapy and immunotherapy also. So I am inviting Dr. Rakesh Taran for giving her blessings on the occasion of Cancer Awareness Day. Dr. Rakesh Taran. Pranam. I am extremely thankful to all of you. आपने मुझे एक बहुत अच्छे विषय को और बहुत ही ल्यूक्रेटिव विषय पे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोग जुड़े हैं नेशनैलिटी से। एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज, बस एक सेकंड। झा साहब प्रणाम जी। हेलो, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। नमस्ते हाँ जी, नमस्कार। सर, डॉक्टर राकेश तारण प्रणाम जी, प्रणाम। ज्वाइन। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कुछ मैं वो था बाकी इसलिए। सभी से आग्रह करूंगा कि अपने माइक म्यूट कर लें। मैं बाकी सभी से आग्रह करूंगा कि अपने माइक म्यूट कर लें। थैंक यू। मैं शुरुआत ऐसे करता हूं कि जब 2012 में मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की मीटिंग में गया, तो उसमें एक पेपर प्रेजेंट हुआ था। कलकत्ता के कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले थे, उन्होंने रेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर के लिए पेलिएटिव सेटिंग में एक कोई कॉम्बिनेशन बनाया था, और उन्होंने अपना जब डाटा प्रेजेंट किया तो इट वाज अमेजिंग। सो साइंस में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सबसे मिस हो रही हैं, और उनके लिए लिंक होना या इन सबको कोऑर्डिनेट करना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि कीमोथेरेपी एक पार्ट है, सर्जरी एक पार्ट है, लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है, राइट? जब पेशेंट हमारे पास आता है एडवांस स्टेज का, या कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं या रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सो उसमें कई बार ये देखा गया है कि वो आयुर्वेदिक का जब कॉम्बिनेशंस में ले रहा होता है तो वो काफी कंफर्टेबल होता है उन चीजों को। मेरे ख्याल से आप सब लोग वो चीजें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे और करते होंगे शायद। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सब जगह जहां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सारे जितनी भी विधाएं हैं हमारी, उन सबको मिला के यदि हम पेशेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट करेंगे तो वो हम सबके लिए एक बून होगा। बिकॉज हर एक विधा में अपनी प्लस है और अपने माइनस है। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या कुछ और सजेशंस हो आपके तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम डॉक्टर अखिलेश भार्गव फ्रॉम अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर। नमस्ते अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके। कुछ दिनों पहले जो ऑन्कोलॉजी की जो सेमिनार थी साइजी होटल में, तब मुलाकात हुई थी आपसे। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिनों दिन जो कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये जिसका जो प्रोग्नोसिस रेट है और जो पेशेंट्स हमारे पास लगातार आते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो पेरीफेरी में जो गांव के जो पेशेंट्स हैं वो आने में देरी करते हैं? ऐसा क्या देखा है आपने सर? क्या गाँव में ज्यादा सुविधाएं देने की आवश्यकता है आज? एक्चुअली अखिलेश जी, दो अलग अलग चीजें। एक, लोगों के पास आसानी से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यदि आप बता भी देते हो कि कैंसर है तो वो 2 महीने 4 महीने भटकता रहता है
कि आप सही तो बोल रहे हो सकता है आप डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। सो वो एक्सेप्टेबिलिटी भी एक मिसिंग है। हाँ, अब ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी पहले से लोगों में बढ़ रही है। पहले जैसा हमें फील होता था आज के 10 साल पहले कि लोग आसानी से कीमो के लिए तैयार नहीं होते थे। आज जब अपन सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उनको सारी चीजें डिटेल में बताते हैं, तो लोग आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। डेफिनेटली सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और इन दिस सच कंडीशन जब हम बायोप्सी के लिए बोलते हैं तो वो लोग डरते हैं कि बायोप्सी कराने में, क्योंकि उनको ऐसे एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे उनके रिलेटिव्स हैं या पेरीफेरी के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने बायोप्सी कराई थी, इसके बाद बीमारी बढ़ती गई, ऐसा एक मिथ्या भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है। इस बारे में क्या कहना है सर? सर इसका मतलब मेरे सामने भी ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आता है। सो मैं 2 काम करता हूँ उसके लिए। सबसे पहले मैं उनको ये बताता हूँ कि बायोप्सी सिर्फ 3 तरह के कैंसर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक पैंक्रियाटिक कैंसर जो लिमिटेड है उसमें नहीं बायोप्सी करना है, ओवेरियन कैंसर जो लिमिटेड है उसमें नहीं बायोप्सी करना है, और तीसरा अगर टेस्टिकुलर मास है तो उसमें आपको बायोप्सी नहीं करनी। ये 3 कैंसर के अलावा और कोई ऐसा कैंसर नहीं है जहां बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। और दूसरा मैं लाइट नोट पे मैं ये करता हूँ कि मैं उनसे उनके आराध्य का नाम पूछता हूँ। सपोज करिए उन्होंने कहा भोलेनाथ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ भोलेनाथ की कसम ऐसा नहीं होगा कि आप बायोप्सी कराओगे तो वो फैल जाएगी। सो दैट इज हाउ आई हैंडल द थिंग्स। सर एक क्वेश्चन और है मेरी तरफ से आपके लिए कि जो हमने कैंसर सेमिनार ज्वाइन किया था 2 और 3 तारीख को, पूरे सेमिनार के दौरान मैंने देखा कि हमने बहुत सारी ऑन्कोलॉजी पे डिस्कस की, स्पेशली फॉर मेडिसिन के लिए, लेकिन पूरे 2 दिन के सेमिनार में हमने कभी आहार विहार, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स इनके बारे में बात नहीं की सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज ए आयुर्वेद डॉक्टर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइफ स्टाइल और बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर हमारा थीम इस बार था इनोवेशंस इन ऑन्कोलॉजी। इनोवेशंस इन ऑन्कोलॉजी मतलब नया क्या है ऑन्कोलॉजी में, तो इसलिए वो पार्ट हमसे लैक हुआ। मे बी हम सेकेंड टाइम में इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम लाइफ स्टाइल और ये सब चीजों को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करें। क्योंकि सर 1931 में एक वार्बर इफेक्ट नाम की एक थ्योरी थी, उसमें डॉक्टर वार्बर को नोबेल प्राइज भी मिला सिर्फ इसीलिए उन्होंने रिसर्च की थी 1931 में कि जैसे जैसे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन शारीरिक प्रवृत्ति का होता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती है बॉडी में वैसे वैसे कैंसर सेल्स का जो डिवीजन होता है वो कम होता है 1931 में। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं हम कोशिश करते हैं कि अनुलोम विलोम या योगा प्राणायाम या राजयोग को उनको बताते हैं, और डेफिनेटली हमेशा देखते हैं कि उनको इन चीजों से कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। जैसे हम गोमूत्र की जो हमारी थ्योरी है वो यही है कि उसका जो पीएच है वो 7.4 से 8.4 होता है, तो एक तरीके से वो शारीरिक प्रवृत्ति का होता है। जैसे आजकल कंगन वाटर आ रहा है तो वो भी शारीरिक प्रवृत्ति का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप भी बेहतर समझ पाएंगे कि यदि आरवीआर की बात करते हैं तो पेशेंट को ज्यादा रिलीफ मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर गेहूं की रोटी खाने का। हमेशा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे आयुर्वेद डॉक्टर्स और जो ट्रेडिशनल वैद्य हैं वो कहते हैं कि गेहूं का आटा बंद करो। एलोपैथी डॉक्टर्स ऐसा नहीं बोलते हैं। कुछ डॉक्टर से मेरी बात भी हुई है इस बारे में। तो सर क्या क्या थ्योरी है, आप क्या कहते हैं अपने पेशेंट को इस बारे में? गेहूं की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हिंदुस्तानी रोजाना गेहूं की रोटी तो खाते ही हैं। एक्चुअली गेहूं के साथ प्रॉब्लम यह है कि गेहूं का सबसे ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा गेहूं का होता है। सो कहीं ना कहीं डायबिटीज के जनन में गेहूं का इंपॉर्टेंट रोल है, बट ये चीजें प्रूवन नहीं है मेरे पास। और जो हम प्रैक्टिस करते हैं आज की डेट में वो हम प्रैक्टिस करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सो जिस भी चीज का हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, उस पे हम बात करते हैं, उसके लिए हम आगे ले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजों पे हम रिसर्च करें और इसको एक सब्जेक्ट की तरह लेके आगे बढ़ें कि भाई कुछ पेशेंट्स एक पर्टिकुलर डिजीज के जिनको गेहूं की रोटी नहीं दी गई और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको दी गई, उनके दोनों के आउटकम में क्या फर्क था। क्योंकि जब तक आप उसको प्रमाणिकता से नहीं लाएंगे तब तक सिंगल मतलब मेरी इच्छा से या मेरे अनुभव से हम वो प्रैक्टिस में नहीं डाल सकते। जो हमने लेक किया वो यही था कि हमारे पास जितना भी साइंस था, हमारा साइंस हजारों वर्ष आगे का था, ये आप भी सहमत होंगे और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमारे पास लेकुना ये था कि हमारे पास उसको एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल वे में उसको हमने संग्रह नहीं किया।
So, जिस दिन वो संग्रह करके हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम काफी आगे निकल चुके होंगे दुनिया के पैमाने। जी, बहुत सही कहा सर आपने, तरन साहब. I would like to communicate only one thing, that all universities like Jamnagar National Institute, All India Institute, BHU, everybody is conducting researches on cancer also, number one. But those researches are unfortunately logged in the almiraj of the library of those institutes. That should be properly propagated, properly promoted, and properly communicated to the modern society. It is my humble request. And I would like to request Akhilesh ji to make a sequence, and question and session will be in the last. So now I would like to request, thank you, Dr. Taran sir. Thank you very much for your guidance. Now I would like to request Dr. K.C. Priyadarshini Gunaratne ji from Yakkala, Sri Lanka. Welcome, madam. Dr. Priyadarshini ji. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening to all. Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Yes. Good evening, all distinguished Ayurveda experts and all other participants. Today I'm going to talk about cancer care in Ayurveda. धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। Then what are the topics I am going to talk today? Introduction, common cancers, then common cancers, type of cancers, then Nidana, Chikitsa, Patya, and the summary. Then if we move to how to beginning the cancers, all cancers beginning in a cell. Our body are made up of more than hundreds million. Sorry for interruption, madam. Sorry for interruption. I would like to request all co-hosts can admit the participants. As I am playing the PPT, it will be difficult to admit the participant. Please support all co-hosts. Kindly continue, madam. Sorry, sir, I didn't get what you are telling. Not to you. I was telling to co-host. Co-host. Okay. No problem. Okay. Please continue. Okay. Then cancer starts with changes in one cells or small group of cells, usually having just the right number of each type of cells in the body. But while developing cancer in the body, it will increase with the number of cells and the shape of the cells. Then what are the common causes of cancers? Especially because of dietary habits, then because of physical activities, virus and other infections, sun and other type of radiations, smoking, tobacco. Not only all these things, but also the mental condition of also effect on the cancer starting. Then what kind of signs of cancers we can identify with the patients? Especially they are coming with changes in bowel or bladder habits, so that does not heal for long time, then unusual bleeding or discharge, either nose, either mouth, either vagina, either urethra, or either anal canal. Then thickening or lumps, especially on the body surface. Then nagging, cough or hoarseness, that also persisting for a long time. Then indigestion or difficulty in swallowing. A lot of patients are coming with indigestion, as well as they are telling they are having weight loss, especially within short time. Then obvious changes in wart or mole.
mostly we are having a lot of warts and moles, but some warts and moles, they are not benign, but they are maybe a cancer. Then if you consider what common cancers in the world, especially in 2020, breast cancers, you can see 2.26 million. Then lung cancers, 2.21. Then colon and rectum, 1.93. Prostate, 1.41. Then skin, 1.2. And stomach cancers, 1.0. Then what kind of signs of cancers in women? Because in world, women especially facing a lot of cancers. Because of that, we have to consider about what kind of signs they are getting while they are having a cancer in their body, especially unexplained bleeding. Especially they are coming with vaginal bleeding, then unexpected weight loss, then skin irregularities, troubles swallowing, then breast changes, bloating due to hormonal changes, chronic cough, fever, fatigue, heartburn, pain. Then what are the important factors about the cancers? That primary liver cancers are the fastest killers of the cancers. Then cancer spreading to the bone, they will get the most painful condition. Then pancreatic cancers are the hardest treatable cancers. Then pancreatic cancers again are the fastest killers, and pancreatic cancers again that silent killers also. Then that lung cancers mostly the deadliest cancers. Then Ayurveda aspect of cancers. Then normally we have heard Granthi and Arbuda. Normally we can consider that Granthi are the benign tumors as well as Arbuda as the malignant cancers. Then Vata, Pitta, Kapha are the aggravated in the body, and they will develop malignant tumor according to the Susuta. Then specially aggravated Vata and Kapha. Why I am telling like this way? If that swelling or the abnormal develop having Pitta association, then it must be the pus formation or suppuration. But in normal conditions, they are not having such condition. That means no pus and no suppuration. So we can consider they are maybe having less Pitta or there's no Pitta association. Then this affect the tissues and result in developing a malignant tumors. Then what are the features of Arbuda? If you consider or if you can examine the places where the lesion is, mostly it's round in shape, firm in consistency, causing mild pain, large in size, deeply rooted in the body, slow growth, no suppuration, as I mentioned earlier, and a swollen fleshy growth. Then type of tumors according to the Susuta. He has mentioned benign tumors, Medaja Arbuda, Kapaja Arbuda, Pittaja Arbuda, and Vataja Arbuda. We can consider that malignant tumors, Mamsaja Arbuda and Raktaja Arbuda. Then what are the Mamsa Arbuda? Occurs when muscles gets disrupted from fighting, for instance. When from the punching, the muscles shows the swelling which is stony hard, painless, glossy, immobile, without inflammatory signs of the same color as the surrounding in the tumor. This form is more common in non-vegetarians. Mamsa Arbuda is extremely difficult to cure for the same reason as Rakta Arbuda. Then we have to see what is the Rakta Arbuda. Then they occurs when aggravated dosha hampered blood vessels in their functions, impeding the blood circulation as well. This leads to disturbance in the blood comparable to accumulation of armor in the body. These toxins can be the cause of tumors. Then when tumors develop in the blood vessels, they are spreading through the blood, and lymphatic system will soon become reality. This large spreading of tumors recovery extremely difficult. That means if that metastasis association, then the treatment is so difficult. And symptoms of blood tumors, little fluid of pus accumulation around the tumor, grow quickly, covered with small metastases and secretions of disturbance, blood. Then it is very difficult to cure. Then what are the forms of metastasis according to Susuta?
Rakta Arbuda, when a tumor is surrounded by smaller tumors. Then Dvi Arbuda, when two tumors arise at the same times in two separate locations. Then Adya Arbuda, development of another tumor over the first tumor, or when a tumor arises on a pre-existing site or near a primary tumor. Then what are the malignant tumors? Tumors cause large secretion of fluid in the surrounding tissues, are located in vital locations or channels, tenaciously attached to the surrounding tissues, are highly difficult to cure. Malignant tumors do not suppurate and do not exclude fluid, blood, and pus anymore. That's what I suggested earlier. Then they are no longer removed by the body, grow quickly and cover a large area. That's why that is so difficult to treat. Then they are caused by 3 vitiated dosha and always affected muscle tissues, adipose tissues, and blood. Then triguna and cancers. Not only the blood functions, but also the mental functions can contribute to the development of tumor. That's what I mentioned earlier. Not only the body factors, the mental factors also associated with the cancers starting and developing. Then when someone is blocked in his development for some reasons, he may be frustrated. This will imbalance the mind and lead to all kind of symptoms like hyperactive, lethargy, indifference, or even depression. Then Ayurveda refers to tamasika, the negative aspect of tamas. Tamas has a strong resemblance with kapha dosha. When a chronic disease such as cancer develops, tamas and kapha are reform each other. Ayurveda considered psychotherapy as a meaningful part of the treatment. Health can only be attained through the balancing of body, mind, and spirit. That's what, while we are treating the cancer patients, we have to treat not only their body, but also their mind, especially with counseling, yoga, and etc. Then what is the samprapti of these arbuda? Vitiated dosha, mainly kapha, entered the affected dhatu. Then vitiation, mamsa, rakta, and medas. Then abnormal vitiation of dosha and dosha followed by their accumulation at one phase. It has protuberance like joint of bamboo, joint between two parts of plants or kernel of fruit or amalaki, and it's relatively hard and rough in touch. Then according to Dalhana, aggravated dosha involving mamsa and rakta, it leads to vataja arbuda, pittaja arbuda, and kapaja arbuda. Then if not aggravated vata dosha mixed with meda and kapha, it will lead to medo arbuda. Then what kind of management we can do? Actually, as that previous mentioned, we can mostly do that palliative treatments better than cure. But in some early stages of cancers, we can treat nicely. But most of the patients, they are seeking from us that palliative treatments. Then I want to tell special thing here. Once we get the suspected patient, we have to go for the tumor marks of the body according to suspected area. If you suspected lung cancer, then we have to go for CA-125, CEA, then liver cancers, AFP, prostate cancers, PSA, testicular cancers, AFP and HCG, then breast cancers, CA-125, CEA and HER, stomach cancers, CEA, pancreatic cancers, CA-125, colon CEA, and ovary cancers, CA-125. Then what is the management we can do? Especially, we have to do the Nidana Parivajana, as I mentioned earlier. Then we have to correct their ahara, then vihara, then we have to apply aushadha. Then if it's not success, then we have to go for anushastra karma. If it's also not success, then we have to go for shastra karma. Then how we can do the Nidana Parivajana? Harmful radiations and chemicals, if they are disposing or getting in radiation such things, then we have to advise them to avoid them. Then
we have to consider about their mental factors, and we have to do something to get rid of their problems. Then apatya ahara, apatya viharana, special addictions, especially smoking, tobacco, etc. Then apatya aushad. Then if you consider about the treatment protocol, we can do that chikitsa in two ways. One is abhyantara chikitsa, other one is bahya chikitsa. In abhyantara chikitsa, first we have to go for the shodhana karma according to the patient's situation and according to the disease stage. In virechana, basti, vamana, raktamokshan, etc. Then as the shamana treatment, we can go for amapachana, agnidipana, shroto shodhana, ojas suddhikara, and rasayana. Then while we are treating in abhyantara, we have to go for bahira treatments also. Then we have to do sometimes vedana, lepa, upanaha, vimlapana, and pachana. Then what kind of shalya chikitsa we can do? As shastra karma, we can do chedana karma, lekana karma, visravana, apaharana, visravana. Then anushastra karma, agni karma, shara karma, and rakta mokshana karma. Here I think you can see the next photo. This lady is around 65 years old, and she is attend to my clinic since 1 month, and she's having kind of malignant tumor on her nose since 1 year. The thing is, she is rejected to go to the surgery. Now she is treating with internal medication as well as agni karma, but after 1 week she get reduce of her nasal block and the size of the tumor. And not only these patients, I am treating these brain malignant tumors, breast cancers, then liver cancers, bowel cancers, especially rectal cancers, and some kind of skin cancers. Then what kind of supportive treatments we can use instead of main course? Then Shota Hara Chikitsa, then Granthi Hara Chikitsa, Vrana Upakrama, Lekana. Especially we have to use that Vrana Upakrama, means just with Upakrama if they are having kind of Vrana in their skin cancers. Then meditations, yoga, relaxation techniques, breathing techniques, especially for mental aid. Then what kind of aushadhi we can use? Then Vata Shamana, Anulomana, and Shulahara. We have to go with the Dashamula Kasaya, Dantimula Kasaya, Yogaraj Gugulu, Vata Gajendra Singha, Narayana Taila Matra Basti, Rilgundi Taila, local application. Then Granthi Harachikitsa, Varuna Kashaya, Kanchanar Gugulu, Chandra Prabhavati, then Shota Hara, Punarnavastaka Kashaya, Kaishwara Gugulu, and Dashanga Lepa application locally. Then what kind of Amapachano Agni Deepana medications we can use? Dhanya Panchaka Kashaya, Bilivadi Kashaya, Panchatikta Kashaya, Panchakola Panta, Agni Tundi Vati, Hinkwashtaka Churna. Then we have to go for Nitya Virechana because lot of patients suffering long-term constipation and the anorexia. So we have to consider about their constipation condition, and we have to give Trivutadi Kashaya, Tripala Kasaya, Tripala Churna, Manibhadra Churna, Tanti Churna, Sukumara Churna. Then earlier I mentioned, while that developing of malignant tumors, it may be specially associated with Vata and Kapha. So we have to consider about the Kapha. So we have to give for Daru, Parpatadi Kashaya, Sitopala Churna, Talisadi Churna, Sharkaradi Kalka, Uddharaja Kalka. Then as a Rasayana treatments, we have to go for Chavana Prashavaleha, Pushmandaleha, Haridra Kanda, Triphala Churna, Ashwagandha Rasayana. Then what kind of herbs especially we can prescribe? Actually, we can see a lot of herbs here, but I think they are most including with our spices, what we are using for cooking foods. This much mostly we are getting in our home garden as well as our villages, so everywhere. Then if I consider about the ahara or apatya, then they have not to take processed meat, red meat, alcohol, dairy foods, fried foods, overcooked foods, salted fish, then sugar drinks or
diet soda, then fast food or processed foods, sugar and refined carbohydrates, sweets, biscuit, flavored milk, packed and fizzy drinks. They have to either reduce or they have to stop taking such foods. Then what kind of viharana or behaviors they have to avoid? Avoid stress, smoking, alcohol, day sleep, then postponing natural herb, then avoiding carbohydrates, protein, oily foods, heavy foods, then drink plenty of water, take meals at the correct time, then maintains healthy weight, then regular exercises and night sleep from 10 p.m. to 4 a.m. These are the natural foods they can use instead of taking unhealthy foods. That's what I have mentioned here. Then what are the ahara or patya foods for them? Especially fruits, berries, pomegranates, grapes, soursop, etc. Then baby jackfruits, bitter gourds, broccoli, red onion, green tea, small fish rich in omega fatty acids, Indian ginseng, unpolished rice and less refined flour, then red spike thorn, etc. Then some foods they are giving special benefit for special cancers. For the prostates, it's very good tomato and methi. Then esophageal cancers, citrus fruits, colorectal cancers, whole grains, cervical cancers, carrots, lung, liver and oral cancers, holy basil, gastric and liver cancers, hogweeds, throat and lung, gooseberry, lung, brain, Munmoria pinnata. For bowel cancers, stomach and throat cancers, it's good garlic. Then colon, hepatocellular, breast, renal and prostate cancers, that is good turmeric. Gastrointestinal, liver and esophageal cancers, that is very good ginger. Then liver, uterine, breast cancers and leukemias, Indian salsapilla. Then esophageal, lungs and some form of oral and bowel cancers, that is good fruit and vegetables, 5 grams daily. Then what is the summary of today's topic? The resulting vision of Ayurveda pathology offers the possibility to develop individualized treatments modules according to causal factors. The casual factors will be one of the 3 doshas, that is prevent from correct functional communication due to lifestyle habits, diet, secondary effects of medication, environmental chemicals, psychosomatic reasons. The possible cause for the disruption of dosha functions are unlimited. If definite, the cause should be removed, as the cause of dosha pathology will prevent the re-establishment of homeostasis. Then what is the conclusion? Then if they use herbs as daily foods or drinks, then they will heal, reduce the side effects, decrease cancer-associated complications. If they come for treatments, then they will relieve from the symptoms, prevent from side effects, decrease cancer-associated complications. If they follow that patya nicely, then they will prevent from cancers as well as healthy promotion. Thank you, sir. Thank you very much, Madam Dr. KCP Gurratne, for giving a wonderful idea for the treatment of carcinoma. Thank you very much, Madam. Thank you, sir. Now I am inviting Dr. Am I audible? Yes, clear. Okay, sir. Okay. And now I'm inviting Dr. Rajesh Kaur from California, USA, for giving a wonderful experience in California for the cancer patient. Dr. Rajesh Kaur, आप सुन पा रही हैं मुझे? Dr. Rajesh, welcome. Yes. Namaste, everyone. Thank you Namaskar, very Dr. Sir. much. Yeah, Welcome. thank you so much. And thank you so much, Akhilesh boss, to give me this chance to just say something about the awareness. I would like to include something like Madan sir says, and Wagoli Pune, it's really good center. I also read some papers from there. And how are they like Madan sir already described the paper and everything, but how they are treating, even they are treating cancer patients only with Ayurveda. They are giving the integrative therapy as well as palliative therapy.
So in Ayurveda, how they conclude, they are giving the Vyadhi Pratyanik Chikitsa, then they are giving Vyadhi Updrava Pratyanik Chikitsa and Chikitsa Updrava Pratyanik Chikitsa. So it's really wonderful, and they are taking Kramvigna Ashya Chikitsa, everything. Then Dr. Taran sir said definitely every kind of modality, they have their own merits and demerits. So if integratively we can work, because finally we want that patient get good care from us. So integratively Ayurveda really help in cancer patients. And KCP ma'am, I think he covered all the cancer modalities, how we can treat people in Ayurveda. So I will not repeat all these things as we already covered them. And as we are celebrating National Cancer Awareness Day, so morally now I will talk about the awareness, how we can aware people. So whenever we talk about cancer, so its treatment outcome, and what can be the effectiveness of the treatment and the survival rate, then cancer prevention and early detection, they really play an important role. And to successfully achieve this goal of prevention of cancer and early detection, we need to understand the significance of awareness. And that's how we are reach more and more people. They can be aware what is cancer, how it can be treated, what are the symptoms. So I will go all through quickly, don't take too much time. So whenever we talk about cancer, already ma'am described that cancer is just the uncontrolled growth of the cells. But I will take care of especially the cancer in women. So when these uncontrolled growth cells happen in reproductive organs of the female, then it is called just gynecological cancer. So here I basically take breast cancer in women and gynecological cancer in women. Others are already covered. So first, I would like to talk about women and cancer in India. So if we see the data, one woman dies of cervical cancer every 8 minutes. For every 2 minutes, newly diagnosed with breast cancer, and one woman dies of it in India. And if we see, these are really scary statistics. 50% of cases are detected at late stages in India due to lack of awareness, illiteracy, fear, and taboos. And therefore, information how to detect in early stages is very, very vital here. And how we can achieve that, we can do this through spreading awareness regarding cancers. Now, women and cancer in USA. According to American Cancer Society, there were an estimated 110,000 new cases diagnosed and approximately 32,000 deaths from gynecological cancers in the US in 2018. And every year in US, about 264,000 women get breast cancer and 42,000 women die from this cancer. And breast cancer is most common among women in US. Then if women have breast cancer, they have more chances to developing other kind of cancers as well, including ovarian cancer and other cancers, especially if they carry a mutation of the genetic gene which is responsible for cancers. And when we go and ask the gynecologists, 9 in 10 said that patient education is very important to improve patient outcomes, and nearly 8 in 10 gynecologists said that biggest barrier to early detection of gynecological cancer is lack of awareness. So now I will come on the topic how we can aware the people about cancer, especially women. So first, I would like that if we can reach people and tell them what are the risk factors, so it will be really helpful. So first, we will talk about those risk factors which can't be changed, like age, family or personal history, race, radiation, reproductive history, their menstrual history, and some genetic factors. These are the risk factors, we can't change them. Then second kind of risk factor which can be controlled, like obesity, exercise, breastfeeding, alcohol,
hormonal replacement therapy, oral contraceptive pills, not having children, etc. These are the factors they can be controlled by the women. And hereditary or genetic factors. So many genetic factors like BRCA1, BRCA2, P53, RB1, and up to 10% of breast and ovarian cancers, they are coming from the heredity. Now, the second thing, how we can reach to the people about the awareness, that is symptoms. If we can tell them what are the early symptoms of a specific kind of cancer, they can maybe more aware and come to the doctor for the early detection. So if I talk about breast cancer, very simple symptoms, they get nipple changes, bloody discharge, lump in the breast, change in breast color, pitting of the breast skin, breast or nipple pain. Then if gynecological cancer, even it's ovarian, endometrial cancer, vaginal, vulvar cancer, they share the same symptoms. So pelvic pain or pressure that does not go away and patient don't know why. Second is they feeling too full or too fast, even they eat just a little. Third one is unusual vaginal bleeding, like having longer or heavier periods than what they have normal, or bleeding after the menopause. So these are the symptoms. If they pay attention and they know, it's really easy for them to recognize their symptoms regarding breast cancer or gynecological cancer, and they can approach to the doctor in early stages, and that can be really helpful to treat the cancer patients. Then third, if we talk about awareness, I believe social media can play an important role. We can reach to the mass of the people through the social media. There are many awareness programs like Move for Her, Move the Message. These kind of messages we can spread through the social media. And many different awareness programs by government foundation, private foundation, even community help to spread the message through the awareness programs. If we talk about in India, so through National Cancer Awareness Day, what we are trying to do, breast cancer awareness is an effort to raise awareness and reduce the stigma of breast cancer through education on symptoms and treatment. We already talk about symptoms, but how we can teach them what they can do at home. Like we can teach them self-breast examination. If they can do it regularly at home, 7 days before and after period, it's really helpful to them. Then second thing, we need to reach to the people and aware them, like for cervical cancer, which is the second most common gynecological cancer. So HPV vaccine, which can be given 9 to 26 years, or more effectively if we want to give it before sexually active, but it can be given up to 45 years. But why I bring this topic? Because it's very recently, this vaccine in only this year 2022, only 12th of July, granted by the Drugs Controller General of India. And this year, September 1, 2022, this vaccine officially launched. So we really need to reach to the people to tell them that now this vaccine, which is effective in cervical cancer, we need to tell them. And there are two vaccines. One is quadrivalent vaccine, which is Gardasil, and bivalent vaccine, which comes with the name of Cervavix. So these vaccines both are really helpful against CIN, which is cervical intraepithelial neoplasia, even second or third grade, and adenocarcinoma in situ, really helpful. So HPV vaccine and regular cervical screening and the Pap smear is the most effective way to prevent cervical cancer. But we need to aware people. If they know, they can come for it. If I talk about in USA, how the awareness programs here, so the Foundation for Women Cancer, bringing awareness to all gynecological cancers, cervical, ovarian, uterine, endometrial, vaginal, and vulvar cancer, declared September as Gynecological Cancer Awareness Month with a goal of reaching more and more people each year. Here, October is Breast Cancer Awareness Month, an annual campaign to raise awareness about the impact of breast cancer. And I brought this Breast Cancer Awareness Month because it's really a good idea if you want to take something from here, how they are taking it as a month of awareness. They are divided in weeks.
So first week they are trying to reach through the education. Education can save many lives. So here they're trying to reach, know the symptom guide, what is the nutrition help, then even the healthy living tip, which include the bra tip fit guide as well. It looks very like a small thing, but it really helpful for people. Risk of breast cancer recurrence and recovery from mastectomy. Then second week they celebrate as a empowerment, because feeling empowerment is vital when we're facing these kind of deadly diseases. If someone diagnosed with any kind of cancer, it's really deadly, but if we feel empowered, we know how to talk about the cancer health and what are the treatments available, patient feel really empowered. Then week 3 celebrate as action. When someone like detected in earliest stages, survival rate is higher, means women must take action for care themselves. Week 4 is community, because if we're having a strong and community and system, it's really powerful force for healing and recovery. Last, for the awareness, I want to bring, like, if patient understand what is the importance if they participate in clinical trials. We all talk about like we need to research, but for research we need patients. So we need to aware the people whenever we like asking them to participate in a clinical trial. First thing, we always take care of their safety, what medicine we are taking. Then in second phase, we trial our drug for efficacy, not like we are practically giving them, but we take the safety, then efficacy. And in phase third, we try to comparison with the standard treatment versus new treatment. And in fourth stage, we bring expansion of the treatment. So how can more and more people can participate in clinical trial? We need to make them aware as well. And now, lastly, just I bring to the small part of Ayurveda, as we Dr. KCP ma'am covered all these things. But Ayurveda as integrative, I believe, has a big role, because conventional treatment for cancer like surgery, chemotherapy, radiotherapy, hormonal treatment, sometimes they are essential to reduce the tumor burden. Still, these treatment modalities, they have many side effects and they affect the quality of life very adversely. So in these such scenarios, Ayurvedic treatment is beneficial to minimize side effects of conventional treatment and to improve quality of life of breast cancer patients, gynecological patients, and even any kind of patients. I just want to quote a shloka from Charak Nidan, chapter 8. Prayogah samyet vyadhim yo anyam udiriyet. Na so vishuddhah shuddhastu samyet yo na kopyet. Ayurveda defines real treatment as one which subsides the targeted disease, but not at the same time producing another disease. But as we all know, that complexity of the cancer, it is difficult to treat it by this definition of treatment. And that's why integrated cancer treatment, combine cancer conventional treatment with Ayurveda, is an ideal model to overcome this difficulty and treat cancer patients holistically. So thank you very much. I know more other speakers are there to speak, so thank you so much. I try to cover the awareness part. Thank you so much. Thank you, Dr. Rajesh. We will be troubling you again and again. No, sir, I'm here only, but it's early morning for me. So I need to wake up at 5 today. Yeah, but yeah, it's wonderful to hear. Thank you so much. That's why I kept your name in the last. Okay, thank you, sir. That's why I kept your number in the last. Okay, sir. Thank you very much. Well, thank you. Thank you very much. Dr. Akhilesh. Thank you, Dr. Rajesh, for giving a wonderful ideas for the treatment of cancer. आपने जो बताया कि अमेरिका में और भारत में एक्चुअली कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, और जितने भी कैंसर के मरीज हमारे पास आते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि यदि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को उनके साथ सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में चलाया जाता है तो डेफिनेटली अच्छे परिणाम हमारे सामने आते हैं। और हमें लोगों के बीच में यही जागरूकता फैलानी है, ऐसी जागरूकता नहीं फैलानी है कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लोगों का भला कर सकते हैं, बल्कि इतना फैलाना है कि यदि आपको कोई कैंसर होता है तो जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो उसका, और जल्दी से जल्दी
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ में आप जो भी ट्रीटमेंट एज पॉसिबल जी, लेना जी। चाहें वो ले सकते हैं, और ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली अमेरिका में क्या स्थिति है इस बारे में तो और ज्यादा बात करनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि इतने कम समय बात नहीं हो पाई पूरी। इसके लिए अलग से हम जी, जी, वेबिनार सर। करेंगे। जी, थैंक यू अगेन वेरी मच। नाउ आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर हेमचंद झा, Associate Professor, Department of Bioscience and Biomedicine Engineering, Indian Institute of Technology, Indore, for giving the experience of research in IIT for the cancer and different type of carcinoma. Welcome to Dr. Hemchand Jha ji. थैंक यू। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir, audible. So I'm just starting with experience when I started research like University of Pennsylvania, 2010 to 2016, where we were working with the viruses, Epstein-Barr virus and Kaposi sarcoma herpes virus, that is mostly doing Burkitt lymphoma. So Burkitt lymphoma is one kind of we can say kind of cancer, mostly occur in the African countries and many other countries. So as I am listening many parts of the cancer, so what I wanted, my submission is that treatment part is fine and well and good, but then one thing possibly that we need to understand the cause of disease. So in that respect is a huge gap it is here, because when we did Epstein-Barr virus caused the Burkitt lymphoma. Without Epstein-Barr virus also Burkitt lymphoma causing. So basically viruses are 20% approximately for the cancer. So in every 5%, 1% because of the viruses or bacteria or these things. So what we have seen in the cellular level as well as the animal model, that when these tumors were generated, tumors मतलब cancer tumor generated by the virus positive cells compared to the virus negative cells, then I am just sharing one the paper that 2-3 paper published in their high impact journals. The treatment regime is different. So what we have done that time from National Cancer Institute USA, we selected 4,000 possible compound, and then we screen on these tumors. So what we have seen, virus infected cancer and without virus infected cancer, the drugs are behaving differentially. So basically it is not that only the treatment for the cancer, it has to also understand what are the sources that is causing the cancer. That is also important from my perspective. So I'm just sharing one slide here, one paper here. If somebody has time, then they can yeah. Is this visible now? Communication biology? Yes, visible, sir. Yes, visible. Yeah. We can see. Yeah, so this is second paper in Nature Publication House, a reputed one. So here we have seen that when virus specific cells inserted in the mice model, their treatment compared to the virus negative tumor is different. So those kind of stuff we have shown there in detail. I don't want to show this here, but now what I am doing in the IIT Indore, that I am going to show it a little bit here. So here we are working with the gastric cancer as well as the oral cancer. We started, and we have also started something with the Ayurveda in collaboration with some of our Ayurveda partner, but that study in very nascent stage, so I am not going there, but just try to show it. Is that my slides are visible now? PowerPoint slides? Hanji, we can see your slides. Yes, sir. So for cancer, I don't need to describe it here because all of you know more than me. So just I wanted to mention that gastric cancer, stomach cancer, or that area cancer, we know that one of the bacteria, Helicobacter pylori, this is the gram-negative bacteria, is associated worldwide.
and has been reported also. So in my study, we have won this. So here basically we are collecting this tissue samples from gastritis as well as gastric cancer from the Indore, one of the hospital. And then we have the culture facility. So we isolated these different from patients, and then we try to characterize it, and then further we are using it. Second infectious agent, we are using virus, epstein virus, although it is mostly associated with head and neck cancer, Burkitt lymphoma, but worldwide it has been reported that only 10% patients, when they have epstein virus like this virus and this bacteria, then the aggressiveness of the gastric cancer or stomach cancer is very high, and they are more drug resistant also. So we are trying to understand why this drug resistance as well as the aggressiveness come from, by what regions. So see, even the gastric cancer, when we have H. pylori negative or EBV negative, and when we have EBV positive, like due to the EBV or H. pylori co-infected, the pattern is different. The aggressiveness is different. The drug resistance is different. So the source is also very important, from where and how it is happening. Then the treatment regime, if we define, that will be more approachable and I can say appropriate for the patients. So here just wanted to show very quickly that what pattern, what kind of experiment we are doing. So like I'm just giving an example. This is like gastric cells, so from stomach cells, and then here in the B we are giving infection with the only bacteria to understand what consequences is happening. Third one, we are giving infection with the only virus. Fourth one, because it is possible that someone may get infected by the virus first and then followed by the bacteria. So this is that one, fourth infection 3. And the fourth one is first given the infection by the bacteria followed by the virus. So basically, if somebody has first virus infection or some then followed by the bacteria, or then if somebody has the bacteria infection followed by the virus, so these are the basically some of the virus genes, how they are like we compare only bacteria or only virus on virus followed by the bacteria, on bacteria followed by the virus, and then expression of the viral genes in the time point manner. And here we have the bacterial genes, because you know that in the SARS-CoV-2 infection also, we have to see the positive or negative by the knowing the SARS-CoV-2 genes. So similarly, this real-time PCR showing that is that first virus infection followed by the bacteria, increasing both. So basically, these co-infection are synergistic, like helping each other, or they are just bystander. So that kind of stuff we try to understand it here. There are some of the like proteomics data. So what we are understanding that they are helping each other, and some of the host protein like our we can say the human proteins like that we are targeting either by the allopathy or by the homeopathy or by the definitely Ayurvedic. So there we can find out some of the specific gun like proteins like you can say oncoprotein. आपके भाषा में जो भी इसको बोलेंगे बेसिकली इसको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज वन ऑफ द होस्ट प्रोटीन, इट इज very much associated with the virus infection, bacteria infection in this scenario. This study right now we are forwarding in the mice also, and we have seen in the mice as well. मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ इस पार्ट में क्योंकि ऑलरेडी काफी डिटेल में पता हो चुकी है. So as madam was telling and as well as other immunity speaker also, so here we check then these are the oncoproteins and cell cycle process, because cancer is uncontrolled death. So how their expression is increasing, or they are the tumor suppressors जो कि कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन को. So ये हमने देखा कि they are getting down regulated, and those are the oncoproteins, oncogenes getting upregulated. So that kind of stuff also we have seen. I'm not going to in much detail, but then we try to knock down and knock out these proteins also, and we also right now we are targeting more that how we can target this particular host protein possibly then that could be treatable for the H. pylori and EBV infected cancer. But now where the Ayurveda comes, so a lot of study in SARS-CoV-2 as well as the cancer also, what we have seen, we start using the Himalayan plants as well as the medicinal plants. So interestingly, I'm doing that part, not in this biology part.
what we have seen, Withania somnifera, I think Dr. Akhilesh Bhargav ji से मेरी पहले एक बार बात भी हुई थी, and thankful to him giving me here the opportunity to listen all of you. So हमने क्या देखा, events part पे हाँ, विथानिया सोमनिफेरा जो शायद आप लोग आयुर्वेदा में काफी यूज करते हैं, और हमने एक्चुअली ऑल ओवर 400 प्लांट्स, दोज आर रिपोर्टेड एंटी कैंसरस and antibacterial or antiviral. We started with a computer based docking and then simulation, and out of that we have seen that this Withania semnifera, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, और इसके 7 प्रकार हैं, मतलब कि बायोलॉजी में इसको हमने 7 तरीके से डिवाइड किया है। उसमें से A और D is looking ki they are binding with the host, matlab host gun carrying as well as the bacteria Helicobacter pylori and the Epstein virus also. And now that we have used in lab, and there we treated basically here मैं बताऊं आपको, सेल्स है उसको हमने विथानिया से ट्रीट किया, जहां पर पहले बैक्टीरिया से इन्फेक्शन दिया एंड देन वी ट्रीटेड विद दिस विथानिया, एंड देन अगेन हेयर वायरस से इन्फेक्शन दिया और ट्रीट किया, मतलब इस तरह का हमने दिया, और इन्फेक्शन में भी को इन्फेक्शन में भी, एंड वी रियली गॉट वेरी एप्रिशिएबल रिजल्ट इन ऑल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा दैट समहाउ इट्स नॉट क्योरिंग कंप्लीटली बट यस इट इज ए वेरी इफेक्टिव। ये पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है, हमने सबमिट ही किया है, माइनर रिवीजन में है, होपफुली इन कपल ऑफ मंथ इट विल कम आउट, बट ये अभी बहुत काम करने की जरूरत है इस दिशा में, और हम लोग कर भी रहे हैं कोलैबोरेशन में बहुत सारे लोगों के साथ। सो फर्स्ट वी ट्राई टू गेट फ्रॉम द कंप्यूटर जनरेटेड डेटा, एंड देन वी आर डूइंग हियर इन विट्रो विद ऑल काइंड ऑफ सेल्स जो हमारे पेट के हैं, फेफड़े के हैं, दिमाग के हैं, और उसको फिर हम लोग एनिमल मॉडल पे भी कर रहे हैं। सो इसमें मैं जस्ट इसे ज़्यादा इसमें नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि रिलेवेंट नहीं होगा, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ या कि रिसेंटली आई गॉट टू नो कि जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, हम यदि एलोपैथी में बात करते हैं तो वी आर टेलिंग ओके ब्रेन सेल्स और लंग सेल और स्टमक सेल, बट जब हम आयुर्वेदा में बात करते हैं तो पित्ता, कफा, वाता, इस तरह से बात करते हैं। सो वी ऑल्सो ट्राइंग नाउ टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि हमने ब्रेन का सेल लिया तो उसमें पित्ता ज्यादा है और डिफरेंट डिफरेंट के पित्ते में टाइप हैं। इस तरह से जब हमने लंग का सेल लिया, मतलब ये फेफड़े के सेल लिए, कफा ज्यादा है, सॉरी कफा, हाँ जल 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 ज्यादा है, और जब स्टमक का रहता है तो अलग टाइप। तो हम इस तरह से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, इज दैट यदि हम इसको पित्त, कफ, वात और इसमें डिवाइड करके समझें और फिर हम कंपाउंड को ट्रीट करें और विद दिस इन्फेक्शियस एंड वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। अभी जस्ट शुरुआत है तो अभी कुछ भी बताना बहुत अर्ली होगा, बट दैट वे वी आर ट्राइंग, एंड डेफिनेटली जो हमारा, जैसे अभी तक सभी सारे स्पीकर ने कहा कि हमारा जो साइंस है, मतलब आयुर्वेदिक साइंस जो है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड था, उसको सही तरीके से शायद सहेजा नहीं गया है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी, बट अभी जरूरत है हम सबको, और इसमें हेड टू हेड कंपैरिजन करने की जरूरत है कि जो भी मॉडर्न साइंस है, क्योंकि हमें यदि इसको जो एविडेंस बेस्ड चीजें बतानी है, सो वी नीड टू डू इट डेफिनेटली इन सिलिको, देन इन विट्रो एज वेल एज इन वाइवो आल्सो। सो हम लोग बहुत सारे इवन की आपको मैं बताना चाहूंगा, और खुशी भी होगी आपको कि अभी IIT, बहुत सारे जो पुराने IIT भी है, खड़गपुर और गुवाहाटी और चेन्नई, इवन की इंदौर में भी हम लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को समझ भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। सो इट इज ए गुड स्टार्ट एंड आई थैंकफुल टू यू ऑल। आई थिंक आप लोग मतलब काफी कुछ कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा और पुश करके जितना ज्यादा, जैसे एलोपैथी तो एक ब्रांच है ही और आयुर्वेदिक भी है, मॉडर्न साइंस जो जितने भी लैब्स हैं, चाहे IIT बॉम्बे की है या जितने जो है, इसको थोड़ा सा यदि हेड टू हेड कंपेरिजन करेंगे तो हमें इंटरनेशनल जो ये है प्लेटफॉर्म है बेसिकली, उसमें इसको प्रेजेंट करने में इजी होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे टर्म्स पता नहीं होते हैं तो उसको हम जोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि अखिलेश ने बताया था कि लास्ट ईयर दिसंबर में वी हैड वन कॉन्फ्रेंस, 3-day कॉन्फ्रेंस वेयर एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड एवरीवन इज ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड दैट वाज मैसिव, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अंडरस्टैंड कि कितना मतलब कि कुछ है, और तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो अभी कोशिश कर रहे हैं। या थैंक यू। Thank you very much, sir, giving a wonderful lecture.
निश्चित रूप से हम सभी मिलकर अभी ये वेबिनार के माध्यम से या आपस में जितने भी हमारे रिलेशंस जिसे कह सकते हैं, गुड रिलेशंस, उनके माध्यम से हम जैसा कि विज्ञान भारती में हमने कार्यक्रम किया था, और चूंकि कैंसर पे इसलिए ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है कि दिनों दिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो आर है, हमारा खान पान है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, हमारे खाने में रोजाना ऐसी चीजें आ रही हैं जिनसे हम इनसे बच नहीं सकते हैं। हम रोजा हम किसी न किसी तरीके से पेस्टिसाइड, प्लास्टिक और लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, वर्क स्टाइल, फूड, जंक फूड, ये सब है तो कुछ कम तो होगा ही नहीं। अभी हम नशा मुक्ति पर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब के साथ मिलकर के। एक्चुअली जितने भी हेड एंड नेक कार्सिनोमा के पेशेंट आते हैं, लंग कार्सिनोमा के पेशेंट आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है कि वो लंबे समय से जर्दा से खा रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू खा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ बोर्ड्स बनवाए इनके लिए, और जगह जगह मेडिकल कॉलेज में, जगह जगह क्लिनिक्स पर हम इनको भिजवा रहे हैं। और हमारी आज सबसे पहली आवश्यकता ये है कि जिन लोगों ने नशा शुरू नहीं किया है, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे हैं, उनको तो कम से कम इससे रोका जाए, क्योंकि इससे आने वाले समय, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर इस तरीके के लोग होंगे जो नशा करेंगे तो डेफिनेटली वो सोसाइटी पोल्यूटेड हो जाएगी। हम किसी को बार बार बीमार होते हुए, बार बार मरते हुए नहीं दे सकते। सरकार को इसमें काफी सारे हॉस्पिटल खोलने पड़ते हैं, डॉक्टर्स रखने पड़ते हैं, और सरकार का एक बहुत बड़ा जो पैसा होता है वे विकास के कार्यों में नहीं लगता है, बीमारों को इलाज करने में ही लगा जाता है। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि जैसे आयुर्वेद में बताता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमारे विश्व की कामना की हमने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी भी आयुर्वेद ने कभी कोई पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि उसकी कामना की सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब हमारे जितनी भी हल्दी है पूरा विश्व काम में ले, धनिया है पूरा विश्व काम में ले, अदरक पूरा। लेकिन आज के क्षेत्र में हमने देखा है कि मेरा इस पर कंसर्न है कि जैसे अश्वगंधा ही है और या फिर हल्दी तो हो ही चुका है, या नीम है, तो यदि हमने इसको हेड टू हेड कंपैरिजन करके मॉडर्न साइंस से इसको एविडेंस बेस्ड नहीं बताया, तो आपको कल के डेट में अश्वगंधा भी उनसे खरीद के यूज करना पड़ेगा। तो ये समाज जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसीलिए हम सब, बहुत सारी चीजें हैं हमारी आयुर्वेदिक में भी और घरों में भी जो कि बहुत इफेक्टिव है, लेकिन यदि इसको हमने पेटेंट कराते हुए या फिर जो भी हमारे एविडेंस बेस्ड चीजें हैं उसको अपने साइड से नहीं दिखाया, तो हमें हमारी चीजों को खरीदने के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक जरूरी है कि जो भी चीजें हैं उसको सही तरीके से करके और उसको बताना भी है इंटरनेशनल जो भी समुदाय है कि ये है, और हम लोग इन एविडेंस बेसिस पे ये क्लेम करते हैं और ये हमारा है। और कल के डेट में आप ये बोलेंगे नहीं ये तो हमने पहली बार, जैसे हुआ नीम के केस में काफी कुछ हो गया, हल्दी में तो फिर भी शायद मिला भारत को वापस, बट नीम का तो मिला भी नहीं। और बासमती का मतलब इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है, और वो तो ऐसे ही है। तो ये बहुत जरूरी है अभी। और अभी आई थिंक देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काफी इस पे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सब लोग तो काफी अभी आ ही रहे हैं आगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अब जो बयान है ये थमनी नहीं चाहिए, और जो अगला 1 दशक है कम से कम उसमें आयुर्वेदा और जो हमारे आयुष है वो इतना ही स्ट्रांगली एविडेंस बेस्ड सारे क्लेम हो कि कम से कम जो अभी पता है आप लोगों को, माननीय आप से कितने लोग हैं, वो कम से कम पूरा इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड हो जाए कि भाई ये तो हमारी है, और आगे फिर इसके बाद और आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये लोग एक एक करके चोरी करके लेके चले जाएंगे। यही है प्रॉब्लम, मतलब वो तो करते ही है, बहुत सारी चीजें होती है। जय साहब, इसीलिए गवर्नमेंट ने आईपीआर के तहत टीकेडीएल बना दी है। तो टीकेडीएल के एक्शन तो चल रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन वो शासकीय अंदाज में ही चल रहे हैं। आशा करते हैं कि जल्दी होंगे, बहुत आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़ा अच्छी ढंग से एविडेंस बेस्ड एक क्लिनिकल रिसर्च का हमें एक्सपीरियंस दिया। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन जी। वेलकम sir from London, UK. He is Ayurvedacharya based in London and 3 other countries. Welcome Dr. Naveen ji. Welcome. So, namaskar to everybody, and then I will take only 5 to 10 minutes as I have to leave. And so, with my humble pranam to Shri Krishna, I begin my talk today. And the normally what I read in the webinar announcement, that it was best care of cancer. So that means we are talking about not about cancer, we are talking about the best care about cancer. So I thought, so I didn't prepare myself, and I just thought that how best we can take care, and all the other dignitaries
speakers have prepared very, very well, and they presented well. And so I'm sorry, I don't have any presentation. I just put some highlights from my Microsoft Word document, which I already put on the chat box. So now I would like to talk about the real crux of the matter. So what I see from the 1 minute, sir. What I see from the Vedas, I start searching from any disease from the Vedas, and then I come to the Ayurveda. Always, I do like that. So whenever I write something, it's about that. So the earliest and foremost record could be cited in Atharva Veda, 2200 BC. During that period, the disease was described under the heading Apachi. And I think nobody's talking about Apachi today, but in fact, in Ayurveda, a lot of literature you can find by the name Apachi also. So, which refers to the present knowledge of various texts of in medicine as multiple lymph nodes swelling. So the first time in Atharva Veda, multiple lymph node swelling was, so you can say today polylymphadenitis or polylymphadenitis, you can say at this moment. And later on, according to Sushruta, the superficial swelling had been categorized under the heading of Arbuda, whereas non-healing ulcer resulted from deep-seated swellings as Asadhya Varna. So he described Asadhya Varna. So Asadhya, you already know. So when Sushruta writes something about Asadhya, so that means Asadhya. So that means that was categorized as cancer. Then based on the clinical presentation, the courses, treatment, prognosis, certain diseases described in the text may be considered as malignant growth or malignant diseases. So normally the cells in the body grow and reduce in an organized manner. It's an organized manner. It's a structured manner, according to genetic information contained within them. The information is stored in a unit called gene. First of all, you all have to understand the units is very, very important. Probably, I don't want to claim that I'm one of the, but I want to go to the crux of the text sometimes, and then it tells me a lot thing about it. For example, here I'm taking a unit as gene, then I take the unit of time, like we say pal, like we say akshinimesh. So the unit of space, the unit of any particle, everything I try to take a unit. So here we take a unit, it is called gene. And each cell contains several thousands of genes. And in cancer or Arbuda or Apachi, what happens is uncontrolled growth and spread of abnormal cells. So now we have to understand what is the normal cell and what is the abnormal cell. So this is all we have to understand. Then only we can come to a point when we can say that it's a oncogenes we are talking about. And you already know bacteria, viruses, faulty dietary habits, high fat intake, obesity, hormonal factors, exposure to smoke and harmful chemicals, etc. They damage the genes. This may be understood by the presentation which I've just made, but I cannot translate that into PowerPoint. It's a lot of time for me. I don't like to do that. So it damages the genes. Further, genetic control switches. The cells divide compulsively, further forming enormous mass of tissue, and that is cancer. So this is how I try to explain myself today. I come back to my normal screen now. Basically, what I have understood, I asked one of my acharya, probably all of you might be aware about the first Ashtanga Hridaya interpreter, Dr. Govind Prasad Upadhyay. He was around 86-year-old young man. And right in the year 1986, I went to him. In fact, I went to his son. His son was he was doing a Siraved Chikitsa. And I wanted to see that Siraved Chikitsa.
And believe me, at 10 o'clock in the morning, you will see 100 of patients at his cabinet. It's his, how do you call cabinet? Practice, at his practice. So, and then I saw that for every patient, he was just doing a blade, normal blade, probably I think the new one. I hope he didn't use the old one, but the new one, and he was making a cut and patient was bleeding. This is what he was doing. And he was really special of that. I met his son, so who was a little bit of my age, maybe a little bit older than my age. Then he talked further to me because I was coming from Delhi. So everybody gets a little bit interested in Delhi. I don't know why, but Delhi is something like that. It attracts. Like Modi also got interested in Delhi. Otherwise, he would have stayed in Gujarat. So Delhi attracts people, you know. So that's why the moment you say Delhi, you get a little bit extra. So then he told me that, why don't you meet my father? Then I met his father. Oh, to meet him, you have to come at 5 o'clock in the morning. I said, I will come at 5 o'clock. So I was staying with, he knew that I'm staying with Dr. S.N. Tripathi, one of the very first HPA from Gujarat, Dr. Surya Narayan Tripathi. All three sons are my good friends, Yamini Bhushan, Vachaspati, and so they are good friends of mine. So I stayed with them, and then I went to him, and I asked him one question. Sir, we focused on cancer treatment, sir. I'm coming. You are always saying like that. Anyway, I will listen to you and not listen to you both. I will do it at the same time both, but with due respect to you. And in the end, I will say sorry to you. So I'm coming to the point here. So I asked him one question to such person who is the authority on Ashtanga Hridaya. What could be the cause of cancer in the practical situation where we are not talking about the bookish knowledge? In your opinions, Guruji, I asked him. So Parvanji, you will be happy. I came back to the topic. But उसकी भूमिका नहीं बांधेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा. बुद्धि छोटी हो जाती है. वेद काल में बुद्धि बड़ी थी, कम बोलने में ज्यादा समझ आता था, ज्यादा बोलने में कम समझ आता है. ऐसा मुझे लगता है. कम से कम मैं तो ऐसा हूं. तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया एक बात, सिर्फ एक बात, वो मैं शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद मैं विदा ले लूंगा. उन्होंने कहा कि भोजन को दोबारा गर्म करके खाना सिंगल मोस्ट कॉज फॉर एनी कैंसर इन द बॉडी. वो दिन है और आज का दिन है. मैंने कभी माइक्रोवेव से कुछ नहीं खाया और मैंने दूसरी चीज उनसे पूछी और उनको तो उस समय पता भी नहीं था कि ये जो ये एल्युमिनियम की फॉइल है ये आ जाएगी मार्केट में एक दिन. वो तो पता भी नहीं था और हमको भी नहीं पता था उस समय. मैं 1986 की बात कर रहा हूं. अभी तो इंडिया में तो बहुत अभी आई होगी थोड़ी 5-10 सालों में, लेकिन विदेश में तो बहुत पहले आ गई थी. एल्युमिनियम फॉइल में खाना बनाना, सब पकाना, सब कुछ ठीक, सब पैक करना, सब कुछ है. आज भी बहुत लोग एल्युमिनियम खाना पैक करके ले आते हैं क्योंकि सुविधा रहती है. तो उन्होंने बताया कि देखो नवीन, ये एल्युमिनियम चल पड़ा आजकल. मैंने कैसे चल पड़ा कि दरवाजे लोग एल्युमिनियम के लगा लेते हैं, शीशा लगा लेते हैं उसमें. तो मैंने कहा मैंने भी लगाया, अपना कैबिनेट बनाया है, तो उसमें पोर्शन करने के लिए छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो ऐसे बनाना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है स्लाइडिंग डोर के साथ. तो उन्होंने कहा कि जितनी बार चटकनी टच करोगे ना आप एल्युमिनियम के दरवाजे की या उसका हैंडल टच करोगे, तो उतनी बार आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो कैंसर के लिए. तो दूसरा कारण उन्होंने बताया एल्युमिनियम. और कहने लगा पहले और दूसरे कारण में बहुत दूरी है, पहला कारण सबसे बड़ा कारण है. With these words, I would like to make a Vani Viram, and with due apologies to Pavanji, to you, so being not so respective during my flow of talk. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Now I would like to request Professor Madan Thangvelu for open session. Akhilesh ji, would you like to say something? ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू नवीन जी. आपने वेदों से लेकर के अष्टांग हृदय तक जो बताया है कि कैंसर का वर्णन है और कैंसर के कारण और उसकी चिकित्सा का वर्णन डेफिनेटली
It was a very wonderful presentation. Now I am inviting Dr. P. Hemanta, HOD, National Institute of Ayurveda Surgery Department. आपके अंडर में कई स्टूडेंट्स पीएचडी थीसिस कर चुके हैं, लगभग 50 से अधिक इंटरनेशनल वेबिनारों में आप लेक्चर दे चुके हैं और अनेक प्रकार के जितने भी सम्मान हैं आपको प्राप्त हो चुके हैं। और डेफिनेटली एनआईए में सर्जरी को एक बड़ा अवसर दिया है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी और डिफरेंट टाइप की जितनी भी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी, वो आज एनआईए में यदि हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में, तो उसके लिए मैं डॉक्टर पी हेमंता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथिक जो चिकित्सा है उसका भी ज्ञान दे रहे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत सहायक होगी हमारे बच्चों के लिए जब वो फील्ड में जाएंगे। नाउ आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर पी हेमंता। Welcome, Dr. Hemant. Welcome. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you Namaskar. for inviting me in this international platform regarding best care of cancer with AYUSH system. See, almost I am practicing last 25 years in the field of surgery. Just I am sharing my knowledge regarding the management of cancer here. Usually the management according to classicals or present context either go for medical management, parasurgical management, or Shalya Chikitsa surgical management, or combination of anyone. These three managements usually practicing here. And my Guruji, Professor G.C. Prasad, and my head of the department during my post-graduation in Benares Hindu University. And he is the person studied or conducted so many research works on cancer in different drugs within all aspects. And there is a separate monogram is available in CCRS, New Delhi, regarding cancer. See, I am basically the surgical according to Susuta's view or Charaka's view. If you go for Susuta Sutrastan, 25th chapter, and Susuta Charaka Chikitsastan, 28th chapter, they mentioned the first line of management is surgery. Chedye Arbuda. Arbuda ka main line of management, Chedan Karma. They mentioned about Chedan Karma. And if you go for in the same chapter of Susu Samhita in Chikitsastan, they mentioned about surgical excision followed by the Lekan Karma, or surgical excision followed by Agni Karma, Kshara Karma, or using of Vrana Sodhana and Vrana Ropana drugs. So this is the main thing. See, actually the slides are not here, but there is a two studies we conducted in our NIA and previously worked in SDM Hassan. There is a one other than surgical treatment. If it is a proper diagnosis, proper screening, proper investigation, if it is a confirmed, it is a case of malignancy. For example, I am giving commonly we are seeing breast carcinoma. If you diagnose as a case of breast carcinoma by mammography or biopsy, then first line of management, what Susruta is, you can go for surgery. Go for surgical management and followed by palliative treatment with Ayurvedic herbs. Especially if it is without any metastasis, after total excision of the tumor, I think there is no need of any other chemotherapy and radiotherapy. And our Ayurvedic herbs, commonly I am practicing 3 drugs
One is Estimadu Kshirapak. Number 2, Kanchanara Gugulu. Number 3, Rohita Karista. Number 4, Ballataki. You can go for Ballataki Taila or Ballataki Rasayan. So this Estimadu, Rohita Karista and Ballataki, it is widely practiced in Benares Hindu University last 30 to 40 years with proper documentation. We are using as a adjuvant therapy or palliative therapy in cancer. That is my observation. And first line of management is surgery, followed by the palliative. That is the one important aspect. Some cases already operated or patient is delayed. Patient is delayed, diagnosis, and it is not possible for excision. For example, I am seeing one case in my during Hassan, Karnataka. One case, diagnosed case of carcinoma of esophagus, and patient is unfit for surgery, and they advised only for palliative treatment. They are advised for stent management. Then put a stent to avoid obstruction of the esophagus. Then patient is not interested for stent. Then he came to our hospital in SDM Hassan, Karnataka. See, that is very interesting case. The surgical oncologist advised if not go for stent therapy, then patient going into complete obstruction, then he can go for gastrostomy. He can go for other drainage procedures. Better go for. Then we started the same treatment of Estimadu Kshirapaka, Ballataka Tail, and Rohita Karista, and we giving some proper counseling and yoga and meditation. You never imagine within 1 month patient is not taking solid diet and patient to start solid diet. But that is not a complete treatment. Then advise the patient go for stent therapy. Why? Because to continue the lifespan of the patient, better you can go for some stent therapy to avoid obstruction, followed by our Ayurvedic management. Total without any surgical management, and then I advised her for stent therapy. Then she came for stent therapy. Then same surgical oncologist advised her better go for the same Ayurvedic management. And more than 1.5 years, we treated the same patient with our Ayurvedic management and finally expired. So it's what I am giving the message for it as a surgical person. If it is a diagnosed case of cancer, better go for first option. If it is possible for excision, go for excision. Then plan for post surgical therapy. You can go for adjuvant therapy. That is continuation of the lifespan of the patient. That is one. And we can continue follow-up is very important to assess further investigations. If any metastasis developed or not, that is also you must to assess. According to that, you can go for treatment. That is one aspect of surgical. There is another parasurgical aspect. Susruta mentioned there is a magotification in Susruta Chikitsasthana in Kafaja Arbuda chapter. 18th chapter, Kafaja Arbuda. He mentioned Nishpava, Pinyaka, Kulutta, Mamsa, Takra. So this combination, I conducted a pilot study in blood cancer, especially external tumors. One pilot study I conducted in CA breast. It is delayed fungated growth right breast. Then I applied for magotification to reduce the size of the breast tumor for 1 week to 15 days. Then I planned for total excision of the radical mastectomy followed by the skin grafting. Then patient is served. This is one treatment. This is another one case.
recurrent operated case of chordoma. It is a chordoma, it is a malignant tumor of the sacrum. This case also I documented. Already it is operated and recurrent case. Then I applied for this magotification. See, why I'm saying that nowadays the maggot debridement therapy. Maggot debridement therapy, it is a very popular in nowadays, especially for the debride wounds by dissolving necrotic and infective tissues, and especially to stimulate the wound healing as a biofilm inhibition eradication. Nowadays in the market, the Finacea selecta, it is a sterile maggots are available for using this maggot debridement therapy, not only for precancerous ulcers, or you can say non-healing ulcers also they're practicing debridement therapy. Why I'm specifying this debridement therapy? It is our contribution of Susruta. It needs further research. It needs continuous research on natural flies attraction of treatment by Susrutas. Nowadays, MDT, it is sterile maggots are available in the market. This is the line of management. What in my practice, and different various herbs are practicing by different personalities and different rasa preparations also they're practicing. Definitely these rasa preparations and our Ayurvedic drugs, they're working for palliative treatment. And finally, I'm concluding this any cancer, better to screen, possible for prevention, proper diagnosis, and proper management. This is the very important thing. Thank you. Thank you. I share my knowledge in this platform. They're given time to share with my experience. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Hemant ji. Thank you very much. आप जुड़ते रहिए इस मंच से. Yes, sir. This Definitely. platform is yours. Yes, sir. Definitely, sir. Actually, slides are there actually. With the documented slides are there. And next time I can share my all slides in front of you. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Akhilesh ji. Yes, thank you. I appreciate. I am really appreciate Dr. Akhilesh. They are doing a wonderful job regarding the wound management and cancer management and popularization of our Ayurvedic modalities, especially in the media platform and in various newspapers. I am regularly seeing almost every day one news regarding Ayurvedic awareness programs. I really appreciate as an Ayurvedic surgeon. All the best, Dr. Akhilesh. Thank you very so much, sir. Namaskar, sir. Now I would like to request. बोलिए अखिलेश जी, बोलिए कुछ बोल रहे हैं. नहीं, okay, sir, okay. Now I would like to request Professor Madan Thangavelu for his comments. Welcome, sir. Madan, sir. Dr. Madan Thangavelu. Professor V.K. Agnihotri, sir. Yes, अभी sir, स्पीकर तो namaskar. नहीं बाकी है ना अखिलेश जी? अखिलेश जी. Dr. Manish Verma is not available in the webinar. I think. कोई बात नहीं, अगली बार वो आ जाएंगे. Daily, definitely. मनीष अग्निहोत्री सर. NS राजा जी हो गए? राजीव? Yes, sir. अच्छा, ठीक. He has given the comment. Yes. So apart from your conduction, you would also like to share some your experiences as usually you use today, because you are here to put the Ayurvedic part first. Otherwise, the persons, oncologist and radio oncologists, they were interested to put forward. Of course, Dr. Rajesh from California, she talked about Pettatmita and Vyadhi Viparit and all that. So if you touch that site also, then I think this today's webinar's topic will be completed. Then we will narrate in few sentences that today's output. मैं मेरे अखिलेश भार्गव जी का
स्वागत करता हूँ। वही तो आज के अंतिम में इसीलिए पूछा कि पहले कोई बाकी तो नहीं है हमारे। लेकिन चेहरे पर प्रकाश आना चाहिए। आपको चेहरे, आप कंडक्ट करते हैं अपनी तरफ, प्रकाश को आप मोड़ देते हैं दूसरी तरफ। प्रकाशवान चेहरा होना चाहिए जी, पहले की तरह। आप म्यूट हो अखिलेश जी, म्यूट हो। धन्यवाद सर बताने के लिए। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था और सुबह से भी बहुत सारे कार्यक्रम थे जिनमें मैं बिजी था, और आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ का एक इंदौर में एक गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर हमने एक धन्वंतरी कक्ष की स्थापना की है जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछले काफी समय से मैं उनके कॉन्टेक्ट में था और वो लगातार देख रहे थे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उनका बहुत अच्छे, वो मुझे भेजते थे और मरीजों का उनको जाकर के बताना कि किस प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं और उन्हें किस प्रकार का लाभ हो रहा है। और डेफिनेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को रखेंगे और हमारे साथ लगातार संपर्क में रहेंगे, और एक आयुर्वेदिक क्लिनिक की स्थापना आज कर दी गई है और उस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मैं उपस्थित था। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए हर्ष का विषय है सर इसे, क्योंकि मैं लगातार उनसे संपर्क में था। तो कैंसर के लिए हम लगातार, जैसा कि अभी पीएम ममता जी ने बताया कि यदि सर्जरी की आवश्यकता है तो डेफिनेटली हमें उनके पास भेजना चाहिए, और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि कैंसर के पेशेंट को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जाए। डेफिनेटली हम सभी ऐसा कर रहे हैं, और उसके लिए जो एडजुवेंट थेरेपी है आयुर्वेदिक, उसको भी हम काम में ले रहे हैं। और जो पीएम ममता जी ने काफी सारी मेडिसिन बताई हैं, और ये इस मंच पर एक्सपर्ट के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है। जागरूकता भी एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसे रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। लोगों को बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू, इनको बारे में आजकल हम देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के पर काफी बैन लगाया जा रहा है क्योंकि उसमें बिस्फिनोल ए नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। अभी हम देख रहे हैं कि लोग अखबार में खाना खाते हैं, अखबारों की शाई होती है, उसमें आइसोब्यूटाइल फटालेट नाम का केमिकल पाया जाता है जो कैंसर का कारण है। हम बाजारों में देखते हैं जो मिठाइयाँ, जो कलरफुल मिठाइयाँ बन रही हैं, उसमें मेटालिन सेफोलाइट नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। तो हम देख रहे थे हमारे खाने और पीने की चीजों में लगातार इस प्रकार की चीजें हैं। तुलसी में, यदि हम कहते हैं तुलसी का लगातार जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसको कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी में यूजेनोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो जिसकी जो कैंसर डिवीजन को कम करता है, मेटासिस को कम करता है। अर्सोलिक एसिड इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ एब्नॉर्मल डीएनए। गौमूत्र का प्रयोग हम लगातार कर ही रहे हैं। सदाबहार जिसे हम कहते हैं, जिसमें विनक्रिस्टिन और विनक्लूबास्टिन नाम के दो तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां इस मंच पर हमने आईआईटी के लोगों को, एडवांस थेरेपी के लोगों को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, एलोपैथिक डॉक्टर्स को इसीलिए एकत्रित किया था कि हम सभी मिलकर के एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पर हम सभी एक दूसरे की सहायता कर सकें, और हमारा जो एक ही उद्देश्य है कि कैंसर के मरीजों को किस प्रकार राहत पहुंचाई जाए, उनमें सफल हो सकें। और ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने के लिए मैं सबसे पहले पवन जी, जो मतलब ये महायुद्ध है रोगियों के लिए और देश और विश्व के लिए जो काम कर रहे हैं, हो सकता है लोगों की नजर में न हो, लेकिन मैं इनको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। और भगवान महाकाल की कृपा है, मैं तो ये कहता हूँ कि 400, 500, 600 साल जीवित रहें और लगातार ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य, चिकित्सा से भी बड़ा कार्य है कि चिकित्सकों को एकत्रित करना और आपस में सामंजस्य बिठाना कि किस प्रकार मरीजों की सहायता की जा सकती है। और ये इतने सारे वेबिनार करना, मैं बार बार कहता हूँ सर ये बात, ये बहुत मुश्किल टास्क है और आप कैसे कर रहे हैं, ये भगवान के द्वारा आपके पास कुछ संदेश आया है और भगवान ही आपकी कोई सहायता कर रहे हैं जिससे कार्यक्रम लगातार संपादित हो रहे हैं। भगवान आपको शतायु करे और इससे भी ज्यादा उम्र दे, और हम सभी मिलकर एक दिन मरीजों के हित में कार्य करेंगे और मरीजों को, कैंसर के मरीजों को स्पेशली राहत पहुंचाएंगे। और जो लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक पाने में हम सक्षम होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर मैं अग्निहोत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सारे सेमिनारों में वो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, एज ए कोऑर्डिनेटर मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा और हमें आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर प्लेस। भगवान तुम्हें भी जिस तुम संकल्प में लगे हो, पवित्र संकल्प में, भाई तुम्हें बहुत आगे तक ले जाए। नशा मुक्ति हो, कैंसर हो,
सबके लिए तो तुम लगे हुए हो एक जी जान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री। नमस्कार सबको, थैंक यू। मैं इससे पहले अपनी कोई बात कहूँ 1-2 मिनट में कह देता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी मंच पर बहुत ही भारी भारी हस्तियां मौजूद हैं और उन मदन सर सबके भी हैं। ज्ञान, जी उन सबके ज्ञान के से लाभ लिए बिना हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मुझे मात्र इतना कहना है कि अभी हमारे प्रोफेसर कुलदीप कुमार पांडे जी दर्शन दे रहे हैं, एक तो वो उपलब्ध है। हमारी मीनाक्षी देव चौधरी मौजूद है, मैडम संगुल सर बहुत दिनों बाद आए हैं, प्रोफेसर गुरुजी सीबी झा साहब मौजूद हैं, वैद्य राजन पटंकर जी मौजूद हैं। इन सबसे निवेदन है कि अभी बने रहें, क्योंकि हमें उन सबका ज्ञान लेना है। और अभी 9 ही बजे हैं, 15-20 मिनट 9:30 तक सब हम कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम समाप्ति तक पहुंचे। तो मुझे 2-3 बातें सिर्फ यही कहनी, जो अभी अखिलेश भार्गव जी कह रहे थे, इन सबका तो बहुत अनुभव है, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, जहां पर हम प्रिवेंशन में ले सकते हैं, वो तय बात है। माइक्रोवेव से यूज की हुई या दोबारा गर्म की हुई चीजें हमारे यहाँ शुरू से आहार में मनाही की गई थी कि भाई ना अति उष्ण ना अति शीत, और जो हमारा सेट है भोजन, जो परिष्कृत भोजन है, वो तो नहीं लेना है। वो सब उसी श्रेणी में चले जाते, चाहे वो फ्रिज में रखे जाएं और चाहे वो दोबारा से हमारे माइक्रोवेव में किए जाएं। साथ ही ये जो कागज वाले कप आ गए हैं, गरम गरम चाय पॉलीथीन सिंगल यूज वाली में, जितना लेबर क्लास है, जितना भी ठेकेदार मंगाते हैं और फिर उसको कप में डालते हैं, वहां पर मोम से वो उसकी सीलिंग करते हैं जिससे कि वो उसका जो लीकिंग ना हो। तो वो सब घुल के गरम गरम चाय में वो अंततः हमारे आहार के द्वारा होने वाली असावधानियों से उत्पन्न होने वाले जितने भी हमारे इसोफेगस से लेके गट के जितने भी जो कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, वही तरीके और भी आ रही जिनमें कि हम लापरवाही कर देते हैं। हमारे अपनी जो चीजें हैं, हम हल्दी या जिंजर, इन चीजों को लेते हैं, पिटाई सब कुछ है, लेकिन इनकी समुचित मात्रा में समुचित रेशियो से प्रतिदिन नित्य प्रयोग के द्वारा ही लाभ मिलते हैं। एट द सेम टाइम 2-3 केसेस देखो, मेरे मिसेस का ही था, वो बायोप्सी तो बाद में हुई जबकि निकाल दिया और रिपोर्ट नेगेटिव आई, फिर भी उन्होंने लगातार 3 महीने अमरूद के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, अमृता के पत्ते और ये थोड़ा तुलसी के पत्ते, ये मिला के जो उन्होंने यूज किया है 3 महीने और काढ़े के रूप में, और साथ में ये जो हमारा गोमृत है यानी कि गोमूत्र का सेवन किया, वो खुद का तो बिल्कुल 100% नेगेटिव रिपोर्ट आई ही, अपार्ट फ्रॉम हिस्टेक्टोमी। और 2-3 केस अभी, एक अभी मुरादाबाद रेलवे में हमारे रिलेशन में ही है, तो उनको प्रोस्टेटिक कैंसर डिक्लेयर हुआ। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, एक स्टेज निकल गई, फिर भी इस ट्रीटमेंट के बाद उनको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और जो रिपीटेड फुलीज की वजह से जो रिपीटेड यूटीआई हो रहा था और मैंने बढ़ रहा था, वो हटा दिया गया। बड़े अच्छे रिजल्ट, टाइम टेस्टेड है, हमको सबको पता ही है। बीएचयू में प्रोफेसर प्रसाद साहब के क्रम में जो वस्ती की बात चली थी, उसके तहत फॉलिस निकल जाते थे, उसमें वर्णवादिपात का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये बहुत सारी चीजें जो प्रोस्टेट को ठीक करती हैं और बीपीएस से होने से, मतलब कैंसरस होने से बचाती हैं। तो ये सब चीजें तो अपनी जगह पर रही ही हैं, लेकिन आज हमें खुशी है कि स्टार्टिंग से ही 41, 40, 41, 42 हमारे पार्टिसिपेंट अलॉन्ग विद अवर गैलेक्सी ऑफ गेस्ट स्पीकर्स आए, तो इसलिए हमारी आज सभा बहुत बढ़िया रही है। और गुणरत्न जी से लेके, भार्गव जी से लेके और हमारे सभी गेस्ट स्पीकर्स में, उन्होंने की हमारे हेमा साहब रहे हैं, हमारी राजेश जी रही हैं, तो जो नवीन जी ने भी चलते चलते अपनी बात रखी। तो ये सब वो चीजें हैं जहाँ पर कि इस अवेयरनेस से जनता को लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आगे संप्रेषण के लिए प्रोफेसर पवन जी को माइक ये वापस देते हैं प्लेटफॉर्म, इस आशा से कि हमारे जो 3-4 हमारे स्पीकर थे, प्रोफेसर कमलेश ये कुलदीप कुमार पांडे जी हो गए, वैद्य राजन पटंकर जी हो गए, नीलाक्षी देव मैडम हो गई हैं, और प्रोफेसर सीबी झा साहब अगर बने हैं, तो उनकी सीनियरिटी के क्रम से या उनकी उपलब्धता के क्रम से उनको उनका आमंत्रण करने की कृपा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पवन शर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं आदरणीय सीबी झा सर को आमंत्रित करता हूँ के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार। वास्तव में इस रोग के बारे में आयुर्वेद में जितना जो कुछ कहा गया है, अधिकतम सुश्रुत में ही इसका वर्णन देखने को मिलता है, जहां पर शुरू में ही कहा कि गात्र प्रदेश क्वचिदेव दोष, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट स्पेसिफाई नहीं किया कि किस कारण से। क्वचिदेव दोष सम्मूर्छिता मान संभविप्रदोष्य,
और मांस के दूषित होने पर ये स्थिति बनती है। हालांकि जितना वर्णन सुश्रुत में है, आज का जो आधुनिक मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो काफी कुछ कैंसर के बारे में विस्तार दे पाया है, और तरह तरह के जो कैंसर हैं उन सब के बारे में हम इस विज्ञान के द्वारा आज जानने में सक्षम होते हैं। और जहाँ तक चिकित्सा की बात है, तो हम सभी जानते हैं, विद्वान वक्ताओं ने अपना अपना विचार सब रखा। जल्दी कोई पेशेंट फर्स्ट हैंड आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास पहुंचता नहीं, और वास्तव में जैसे एविडेंस बेस्ड कुछ इस तरह की चीजें हों, बिल्कुल जांचा परखा हुआ, जिसके आधार पर आदमी विश्वास के साथ इसको ट्रीट करे, तो हमें लगता है कि इस तरह की चीजों का भी थोड़ा सा अभाव है। तो और जहाँ तक दवाओं का प्रश्न है, तो काष्ठौषधियों से लेकर के और रसौषधियों में भी हीरक है, स्वर्ण है, ताम्र है, मल्ल है, ये सारी चीजें लोग प्रयोग में ले रहे हैं जहाँ तक, और उसका लाभ भी मिल रहा है। हमारे यहाँ हमारे कुलदीप पांडे जी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम उनको सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, और हम आगे के वक्ता को सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर पे हमारे कुलदीप पांडे जी भी बहुत काम कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे जी फ्रॉम BH, वेलकम पांडे जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू पवन जी। सबको प्रणाम करते हुए, आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड वेरी मच डिलाइटेड टू लर्न अबाउट द experiences and their views regarding the cancer prevention and treatment modalities and how we can collaborate. I am especially thankful to Dr. Bhargav and Dr. Hemant and Dr. Rajesh and Mr. Jha. They have highlighted many more aspects of cancer prevention and cancer treatment modalities. But in my opinion, what I think that if we work together and collaborate with each other, because cancer cure is not just a single-centric treatment. It requires an umbrella care to the patient. And counseling being a best part, be focused not only with the patient, but also to the attendant, those who are coming with the patient, how you are going to prevent the cancer in your life, because the evidence is in your front. Second one, as we all know, the Arbud, Apchi, Granthi, and many more diseases are mentioned in the terms of the cancer, and they can be correlated by the evidences and the diagnostic devices at many more stages. And when we go through the international or modern medical science platform, they used to ask what type of cancer you are going to treat and what the stage of cancer according to Ayurveda is there. I sent a newspaper cutting to Pawanji and Agnihotriji. They might have gone through that. That was a case of non-Hodgkin's lymphoma and was operated after chemo and radio. There many complications were developed, and that was cured by pure Ayurvedic herbal drugs, not under rasayanas and rasas. But in my opinion, if Dr. Bhargav is doing there, Dr. Hemant is doing there, and Dr. Jha is doing very nice work, and what I had done in my MD and PhD in 90s. And Vithania, no doubt, has a great role regarding the anti-carcinogenic effect. But many more drugs are there that can be evaluated on scientific parameters. So Ayurveda is rich mine of knowledge, and that can be utilized for this dreadable disease. And for that, we have to be collected and collaborative with each other.
Magnification is the recent branch in medical science for the cleaning of the wound and to develop the healing qualities of the non-healing ulcers. And that has been mentioned in the ancient literature. That to be adopted here. And Dr. Hemant is doing there, I know it. But what type of cancers we are going to treat as per our Ayurvedic terms and technologies, that must be developed. Because if we adopt those parameters, only whatsoever is mentioned in the modern medical science is not sufficient. We have to develop our own parameters for the cancer detection, and the surgeons or the physicians like us, if they are treating cancer patients, they have to develop a database and correlate what type of cancer is there and what part of there, what is the dosic approach, and what is the prakriti of the patient, what is the prakriti of the cancer, and what stage, what symptoms are there, and what type of treatment modalities has been given to the patient. That must be correlated with our own parameters. And then only we can establish our own science regarding this challenging cancer like dreadable disease. So I enjoyed Velia, and I do hope that by this platform, I may collaborate with other persons like Mr. Jha. I have requested him, and Dr. Bhargo is doing well there, and Dr. Hemant is also there, and one more speaker, Rajesh. So I would like to collaborate, and most welcome if anyone wants to collaborate with us, because I have developed my own drug design and development research laboratory here, and in collaboration with the modern medical science people and the ITs and the science faculties. If anyone is interested, more welcome. We will collaboratively work for the nation and for the society. Thank you, sir, for giving me this opportunity to share my experiences with all of you. Thank you. Thank you. Are you are dedicatedly working on cancer and allied diseases. Thank you. Thank you, sir. Then I have sent the latest cutting of the news to you, sir. Great, great. Thank you very much, Panditji. Now I would like to request Madan Thangvelu, sir, whether Madan sir, Professor Madan Thangvelu. Sir, Dr. Sudha Parikh shared a very good experience in the chat box. If she is on the platform, it will be better. मैं मदन सर के बाद में बुलाता हूँ. Yes, हाँ जी, जी सर, मदन, welcome मदन सर. Pawan ji, namaskar. Sorry. Yeah, juggling between meetings. Pawan ji, इसमें हमारी तरफ से ये है कि थोड़ा और the interest in cancer has increased in how to manage with Ayurveda. And the evidence is pointing to possibility, not only Ayurveda, but all the Ayush systems. So that is a very good thing. There are a lot of teams across India now. Vagoli is one place where there is some interest. Dusri, there are big cancer centers. Ek hai ji Adayar, Chennai mein, very large cancer center. There is a new director there, Hemant ji, and he is very interested in these alternative systems of medicine. Now, we need to move with the times. When we look around the world and we see how much work is going on in understanding cancer, or when we try to interface Ayurveda with this, with that ongoing momentum in other places, we see a big gap. कि आयुर्वेद के अंदर है काफी कुछ, आयुर्वेद की भाषा में कुछ बहुत ज्यादा है, which can benefit modern medicine. But modern medicine wale don't know what is happening in Ayurveda. And the modern medicine people don't want to, it is difficult to understand Ayurveda. It is difficult to go into Ayurveda very quickly to understand dhatus and doshas and agni and mala, and all these concepts are easy to if you want to, but difficult to if you hesitate to understand. This is a difficulty of how to bring this dialogue between modern medicine people and Ayurvedic people. And this is what we need to find out. If I take one or two examples, Pawanji, we talked about stress
and the reasons for metastasis, etc. In breast cancer, Hindustan, when we look at breast cancer, we see a lot of triple negative breast cancers. And that paper I showed you is one example. Triple negative breast cancer, how to treat it, how to do a comprehensive treatment using all the Ayurvedic vidhis and karmas, and how to get an extended lifespan, 10.5 years or more is a very, very good, for stage 4 cancer is a very good outcome. But where else can we do? We need to do more systematic approach to gather information. Kahan ho raha kaam? Ab Bhargav ji ke saath Indore mein chal raha kaam. But we need to bring it to a benchmarked outcome. Benchmark matlab, if we discuss with people in Wagholi कि आप लोगों के पास क्या है और हमारे पास क्या है, can we have some kind of agreement कि इससे कम नहीं होगा हमारी काम? That means the minimum treatment for a cancer patient will be like this. So pura Hindustan ke liye, whoever is doing cancer treatment, we will, in Ayurveda, this is the minimum that we have. And maybe specialized institute like Wagholi have other resources, they have more resources, so they can do something more. So that, I think we must come to that one agreement. Dusri cheez, research ki taraf. Research ki taraf matlab, not only clinical research, but also basic research. In that paper I showed you, if we look at that paper very closely, it has many, many formulations and many, many approaches. Why don't all of us Ayurveda people come together to agree that there is something here which can become the minimum standards? Bhargav ji, ye dekho isme, case report is very simple. Female patient, 41 years, etc., etc. She has a cancer problem. And then it goes into the protocol that is followed. I just want to go little by little into each of these procedures. There is one yog here. For those in the Rashastra area, they will understand this yoga very correctly. Or aage, many, many protocols, Triphala Gugulu, simple protocol, and that is used for 2 years, 7 months, very long duration of treatment. And then we keep that one procedure, and then we change our protocol to include new formulations. Previous presenters in our platform have discussed this. Pavanji will know, we have had colleagues from Karnataka who have presented excellent case studies where they have shown results. We should come together somewhere. Now, whether it is in Indore, whether it is elsewhere, I don't know. But I think if we have a place like Manasarovar Global University as a place, perhaps that is a good environment to do this kind of benchmarking discussion. Aap bhi wahan ho, Bhargav ji, you are also Nazdeek hai, Pavan ji ki Bhopal mein. Why don't we think about one outcome like this, where we come together to survey Hindustan mein kahan chal raha. Gujarat mein kuch, there is a lot of work going on with Gomutra Chikitsa. We need to understand usme kuch hai ki nahi. So there are many, many areas where we can come together to provide. I don't think the CCRAS will be in a position to accommodate so much work. But if we can discuss with CCRAS saying, we want 5 years of space where we will bring all the Ayurveda workers together into a discussion, minimum benchmarks, treatment approaches. The last point, Pavanji, I want to share is because we have so many people interested in cancer today, in the session today, we went up to 40 plus participants today. Ek America mein, unke National Cancer Institute ke saath charcha chal raha, CCRAS and National Cancer Institute. Ab unki wahan se kya seekhe hum, or what can we teach? Us taraf kya dale, hamari taraf se. So this is something very important. I forgot to put that
in our chat box. Let me put this on the screen so that people who are not able to view us directly can also see this when they are viewing our recordings. This is the website. I request all of us to look through this website or usme see how much work is going on there, or hamari taraf se kya, what can we give into this discussion. Ye dekho, ye hai National Cancer Institute ka Division of Cancer Treatment and Diagnosis. Unki ek special department hai OCAM karke, Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine. अब उसके अंदर एक memorandum of understanding है between USA and India, or letter of intent between OCAM NCI and CCRAS India. और यहाँ पे thinking together a research-based dialogue between National Cancer Institute, OCAM, and CCRAS. इसके अंदर अगर देखो, so there is a outline of what is the direction. Key collaboration will include the following areas. 5-6 point इसमें है. और आगे we have had several webinars till now. Ayurveda in cancer care. We have had one webinar here on the 10th of July 2021. फिर उसके बाद 30th of November 2021. तीसरी webinar 1st of 27th of January. Thinking together. अब what is, at least all of us must know, कौन है इस discussion में, who is discussing what, and where it is that we as an extra activity can contribute to this, to discussions that are going on. I will put this in the chat box. For those who are viewing us on YouTube, I will leave this for just a few seconds more. You can see it is the National Cancer Institute, Division of Cancer Treatment and Diagnosis, Office of Cancer Complementary and Alternative, Cancer Complementary and Alternative Medicine. So you can get all these details there. So there are a lot of discussions going on, alag-alag jagahon mein, or how to bring it all together and who will do it. Ye shayad Pawan ji ka kaam honi chahiye. Pawan ji, आपने तो you have brought इतने लोग, हमारे कैंसर की डिस्कशन पिछले साल भी हुआ, काफी कुछ कर्नाटका से काफी लोग हैं हमारे साथ इसमें, उनको भी ले आए साथ. और आपके डिपार्टमेंट में पवन जी, आपकी यूनिवर्सिटी में भोपाल में थोड़ा इसकी तरफ अगर थोड़ा करे. और जरूर सर, जरूर. अग्निहोत्री जी है, उत्तराखंड से भी ले आएंगे लोग बाग. जी सर, जी सर. So, हमारी तरफ से यही है पवन जी कि इतना काम चल रहा है, कमाल के काम, इतने so much interest in this area. Yes. And CCRAS and ministry will appreciate if we can also help them a little bit. So I will leave it there, and that is my analysis here, Pawan ji. Very nice, sir, very nice. बहुत धन्यवाद. Now session is open. If anybody would like to add anything in cancer, session is open. Dr. Sudha Parikh ji, Dr. CP Sharma ji, स्वागतम. शर्मा जी प्रणाम जी. सर प्रणाम सर. सभी को अग्निहोत्री जी नमस्कार, अखिलेश जी को भी नमस्कार, पवन जी को नमो. चूंकि मेरा कैंसर के ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, या मेरे पास बहुत एडवांस केसेस के जरूर आते हैं जिसमें हम थोड़ी सी उनकी लाइफ और जो उनको मानसिक कष्ट होता है उससे थोड़ी मुक्ति दिलाने का तो प्रयास करते हैं कुछ औषधियों के माध्यम से, जिसमें हमारा आम्लकी रसायन है, अनार है, तुलसी है. यहाँ में एक प्रश्न जरूर मेरे दिमाग में आ रहा है. 1-2 के पेशेंट मेरे पास आए, चेस्ट जो पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के रूप में डायग्नोस होता है, उस स्थिति में आयुर्वेद ने कुछ सोचा, भार्गव साहब
अखिलेश जी, जब वो पेशेंट जो हमारे पास हमें मिला, क्योंकि ग्वालियर में भी सर एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो कुछ पेशेंट प्रेसिपिटेट होके ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं हम लोगों के पास। तो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस था, मेल पेशेंट था, और मेल पेशेंट जब हमारे पास आया था तब उसको सेकेंडरीज डेवलप हो चुकी थी। उस सेकेंडरीज डेवलप होने के बाद जब हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया, उसमें 2 काम जरूर हुए थे हमारे च्यवनप्राश आम्ल की रसायन, इससे कि जब उसको शुरू में जब कीमो वगैरह देते थे तो हम उसको अनार और हम च्यवनप्राश खिलाते थे। साथ ही जब कीमो के लिए जाता था उस समय भी हम उसको मुलेठी चूसने के लिए देते थे कि आप अपनी मुंह में रखना, कोशिश करना, मुलेठी चूसते रहना। तो उसको जो नौशिया और वो होता था और उसके बाल जो झड़ जाते थे, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो ये रहा। क्या ये पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जो असाध्यता, प्रोग्नोसिस क्या रहती है अखिलेश जी? दूसरा, जो भी हमारी औषधियां हैं एंटी कैंसरस, तो जो सिंपलेस्ट प्रोटीन है, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे मुग्ध मूंग की दाल हो, मुग्ध पथ्यानाम श्रेष्ठः आयुर्वेद ने कहा, या हमारी तुलसी हो, तो ये सब चीजें हमारा आयुर्वेद इस ओर अपने तरीके से विश्वास वो करे, एक प्रयास, चाहे वो हम रसायन औषधियों के माध्यम से उसको सर्वाइवल को बढ़ाएं, चाहे हम सदव्रत के माध्यम से। इसमें मुझे रामायण की एक चौपाई याद आती है, सुधा ब्रष्ट कप भालु जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पहि आए। जिए भालु कप नहीं रजनीचर। लब जब सब रावण राम का वो चल रहा था युद्ध, सब रे भालू और कपि बेहोश हो गए थे, मरने वाले थे, आघातित थे, ट्रॉमा से थे। तब भगवान ने इंद्र को निर्देशित किया, तो इंद्र ने अमृत वर्षाया, सुधा वृष्टि की, तो उसमें जो जो भालू और कपि थे वो सब जिंदा हो गए, और जो रजनीचर राक्षस थे वो मर गए। तो जो हमारा आयुर्वेद का स्वास्थ्य संरक्षणीय व्यवस्था है, या जो सदव्रत है, उसका पालन ये लोग करते थे, वो लोग बच गए। जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या और इसका पालन नहीं करते थे, इसका व्रतक्रमण करते थे, रजनीचर जो राक्षस थे, रात को ही जगते थे, वो सब मर गए। तो ये सुधा वृष्टि का कार्य भार्गव जी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, परंतु मैं चाहूंगा पूरे विश्व में ये सुधा वृष्टि, आयुर्वेदमयी सुधा वृष्टि, जो कैंसर के रोगियों को सर्वाइवल और एक मानसिक क्लेश वाला जो जीवन है उससे उबारे। इसके लिए चाहे हमें एमओयू करें हम, मदन जी हमारे लिए पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक, सब तरह से हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो हमें प्रेरित करते रहें। हमने जो अभी 32-34 साल की सेवा में आयुर्वेद का जो सार समझा है, चाहे वो हम प्रिवेंटिव मेजर्स में लिया हो, चाहे हमें एकल औषधि में मिला हो, चाहे हमें एक योगों के रूप में, तो ये हमारा एक प्रयास है। तो हम सब लोगों को ये सुधा मई अमृतमयी आयुर्वेदीय व्यवस्थापन परोसने का प्रयास करना चाहिए। और ये मेल वाला थोड़ा जरा एक्सप्लेन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु डॉक्टर सीपी शर्मा सर, आपने बढ़िया बात बता दी। अब इतनी ऊंची बात बता देते तो हमारा रामचरितमानस पढ़ने का थोड़ा जो चल रहा है जीवन का क्रम, वो एक बार से उद्वेलित हो जाता है। आपने कहा ना कि जो भगवान इंद्र जब आए, रामचंद्र जी से पूछा हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप अमृत वर्षा कर दीजिए, हमारे भालू कपि जो मेरे कारण जो गत प्राण हुए हैं वो जीवित हो जाए। ये उन्होंने ये लंका का जी सुनिए, लंका कांड में है, लंका कांड में ये लंका कांड लास्ट में मेरे पास रामचरितमानस मैंने हाथ में है, मैं अपने से दूर नहीं रखता हूँ।
तो हुआ क्या था इसको समझ लीजिए, बड़ी टेक्निकल चीज है, बहुत गहन अध्ययन करने से मिलता है। जब इंद्र भगवान ने अमृत वर्षा की तो बात ये थी कि हमारे बानर भालू कपी से इन लोगों ने सामने शस्त्र खाए थे और तब वो अचेत हुए गिरे थे, उनका मुंह ऊपर की तरफ था, उनको अमृत मिला और वो जीवित हुए। और राक्षस निशाचर जितने थे वो सब पीठ पे उन्होंने घाव खाया था, तो वो उल्टे मुंह पड़े थे, अधोमुखी थे, इसलिए वो अमृत को वर्षा होने के बावजूद प्राप्त नहीं कर पाए। जय हो, जय सिया राम। जय थैंक यू सर, थैंक यू। I would like to invite experts from audience on focused of cancer treatment. If you have any experience, any observation, please share. Please share. Time is less. Please share. डॉक्टर सुधा पारिक बोल रही थी ना? डॉक्टर सुधा पारिक बोल रही थी। सुधा पारिक जी स्वागतम, स्वागतम। पारिक जी है प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने चैट बॉक्स में अपना एक एक्सपीरियंस दिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ट्रीटेड केस जो है वो बेड रिडन थे और वैष्णो देवी की यात्रा कराए। तो मैं चाहूंगा वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, उनका स्वागत है। जरूर जी। क्यों नहीं आ रही मैडम सुधा पारिक जी? हाँ आ रही। अनम्यूट तो किया है उन्होंने। हेलो 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 सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। डॉक्टर मनोज अरोड़ा फ्रॉम राजस्थान आयुर्वेद। लखा जी वो तो गाड़ी में कहीं चल रहे हैं, नीचे सुधा पारिक जी आ रही हैं। हाँ नमस्ते मनोज जी बोलिए। बड़े लोग गाड़ी में रहते हैं सर। नहीं सर, मैं कहीं मार्केट में था, मैंने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये चल रहा है डिस्कशन, तो इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने कहा एक हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको भी शेयर किया जाए। तो ये सोच के मैंने कहा एक बार मैं इससे जुड़ता हूँ और थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि आज के समय थोड़ा बर्निंग प्रॉब्लम तो है ही, चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी है। तो कुछ इससे रिलेटेड वर्क हमारी यूनिवर्सिटी में भी किया गया है, और एक्चुअली हमारे यहाँ कैंसर यूनिट भी है। वैसे तो मेरा डिपार्टमेंट द्रव्य गुण है, तो डायरेक्ट तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हमने फिर भी हमारे डिपार्टमेंट में इसको लेके वर्क दिया था। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है कीमो रेडियोथेरेपी को लेके, तो उसके कॉम्प्लिकेशन कम किए जा सके इसको लेके हमने एक योग दिया था, जिसमें उसमें गुडुचि स्वायरस का और पिपली का उपयोग किया था। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं बॉडी में इस डिसऑर्डर में, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमने देखा है जो कि रेजुविनेटिव ड्रग का पहले यूज किया जाए। अगर अपन कोई भी मेडिसिनल हर्ब देते हैं तो उसके साथ अगर कोई रेजुविनेटिव ड्रग भी ऐड की जाए तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि हम जैसे कि देखते हैं कि इम्यून सिस्टम इसमें किस तरह से इम्यून सप्रेस होता है पूरा सिस्टम और डाउन हो जाता है, और व्यक्ति की जब इम्यूनिटी पावर ही नहीं रहेगी तो आप कोई सी भी उसको औषध दें या कोई सा भी ट्रीटमेंट दें तो वैसे ही उसकी जो सेल डिजनरेशन है वो चालू रहता है, और वो उसकी मतलब उस तरह के रिजल्ट आप कुछ भी मेडिसिन देते हैं तो नहीं आ पाते। तो आग मेरा मानना है इसमें कि अगर अपन कोई सा भी ट्रीटमेंट दें उसके साथ अगर कोई रेजुविनेटिव ड्रग को ऐड किया जाए तो उसके बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने दिया था तो उसमें गुडुचि स्वायरस को ऐड किया था, तो गुडुचि स्वायरस जब उसके साथ ऐड किया पिपली आदि रसायन के साथ, तो उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले कि सेल की जो एक्टिव पोटेंसी है वो बढ़ी। और हमने देखा कि कुछ ऐसे आप भी जानते हैं कि पूरी तरह तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके कुछ हद तक हमने कॉम्प्लिकेशन कम किए। उसमें हमने देखा भी सही, वो क्लिनिकल रिसर्च कराया था उस पर और हमारी कैंसर यूनिट में उसको रन भी किया था। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आमल की रसायन है, अपना गुडुचि है या भल्ला तक है, इन रसायन का उपयोग अपन कोई भी ड्रग देते हैं तो इसका जरूर इसमें यूज करना चाहिए। साथ ही जो मेडिसिनल वैसे हमारा डिपार्टमेंट द्रव्य गुण है, तो हमने देखा है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द्रव्य गुण में जो भी प्लांट जो हमारे रूल लगते हैं 4, उसके अकॉर्डिंग जो चौथा रूल है द्रव्य गुण का रसादि के परस्पर संबंध में, तो हम उसमें देखते हैं कि कोई भी ड्रग हो वो अपने रस से या गुण से या वीर्य से या विपाक से या प्रभाव से, इन सभी से जो ड्रग काम कर रही है वो निश्चित रूप से कार्सिनोमा पे वर्क जरूर करेगी, चाहे वो कोई सी भी ड्रग हो।
इन चारों, जैसे अपन देखते हैं कि कोई ड्रग तो केवल रस से ही काम कर रही है, कोई प्लांट होता है वो केवल गुण से ही काम करता है, कोई प्लांट होता है वो अपने केवल वीर्य को लेके काम करता है या विपाक को लेके काम करता है। तो यानी अपनी पोटेंसी है या पोस्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंस है या उसके टेस्ट है या जो भी आप कहना चाहें, या उसकी प्रॉपर्टी क्वालिटी जो भी है, उसमें से किसी एक से ही काम करता है। बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जो सभी को मिलाकर काम करते हैं। जैसे हम गिलोय की बात करें तो गिलोय अपने रस से और अपने वीर्य से, यानी उसकी पोटेंसी और टेस्ट को देखें तो वो उसको मिलाकर देखा जाता है तो वो त्रिदोष शामक होता है। और उसका विपाक जो मधुर होता है उससे वो विषय कम करता है और प्रभाव से वो वात रक्त का शमन करते हैं। यानी उसका कोई उसके जितने भी फार्माकोडायनेमिक्स हैं उसके किसी ना किसी पार्ट से कोई ना कोई एक्शन देखने को जरूर मिलता है, और इसी कारण से वो त्रिदोष शामक ड्रग में शामिल भी किया गया है। तो जो हमारे द्रव्य गुण के हिसाब से जो भी ड्रग चौथे रूल पे जाएगी वो निश्चित रूप से कार्सिनोमा पे इफेक्ट जरूर दिखाएगी। तो उसमें जैसे हम बात करते हैं तो उसमें गिलोय नंबर 1 पे आता है, आमल की है, अश्वगंधा, ये निश्चित रूप से ऐसी प्लांट्स हैं जो निश्चित रूप से उसमें इफेक्ट जरूर दिखाएंगे। जैसे टर्मेरिक है, मोरिंगा है। आप मोरिंगा के आप भी देख रहे हैं बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं मोरिंगा ओलिफेरा की कि उसके आप देखिए डिफरेंट पार्ट से अलग अलग यूजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें मेरा यही मानना है कि अपने को कैंसर का ट्रीटमेंट में जैसे अपन देखते हैं पिपली भी काम में ले रहे हैं, तुलसी भी काम में लेते हैं, काचनार भी, बाउनिया वेरिगेटा वो भी काम में लिया जाता है। तो सदाबहार को तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया उसमें रिसर्चेस भी बहुत हो चुकी हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज भी अपन उसमें पेपर जाकर देखते हैं, जर्नल देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है अपन कोई सी भी हर्ब यूज करें उसके साथ कोई सी भी रेजुवेनेटिव ड्रग को जरूर ऐड करें तो वो बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें ये मेरा अपना खुद का मत है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मनोज अरोड़ा, यू आर द यंग साइंटिस्ट ऑफ आयुर्वेदा। और डॉक्टर मनोज हमारे मित्र हैं और कई बार कैंसर के जो पेशेंट्स आते हैं मेडिसिन यूज के लिए जानी चाहिए, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमसे जुड़े और हमें ऐसी सारी जानकारी दी, और भविष्य में भी इस प्रकार आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी कामना है। थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर मनोज। थैंक यू सर। डॉक्टर पवन। मनोज जी आप यू आर टुडे जॉइनिंग फ्रॉम राजस्थान, क्यों जी? या सर, या आई एम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। हाँ जी। एक सवाल है जी, आपने जो बताया इसकी थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच हो सकता है कि नहीं? आपने तो बताया कि द्रव्य गुण की जो 5 एस्पेक्ट, इसकी थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच उसकी तरफ कुछ कर सकते हो? कुछ डिस्कशंस या कुछ छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ हो सकती हो कि नहीं? आपके मन में क्या है जी? बिल्कुल सर, मैं नेक्स्ट टाइम जो भी आपका इसमें जो भी इस थीम पर जब भी कोई डिस्कशन होता है तो मेरा इसमें प्रेजेंटेशन है, एक्चुअली आई एम ऑन द वे, तो मैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको उसमें पूरा क्लियर करूंगा कि किस तरह से अपन उसको ड्रग्स की फार्माकोडायनेमिक्स को लेके अपन आगे काम कर सकते हैं। बढ़िया जी। वी शुड एक्सटेंड, इसमें पूछने की कारण ये है कि काफी चल रहा है जी काम हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में, और देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी रीजनल कैंसर सेंटर्स है अलग अलग जगहों में, वहां से भी थोड़ा वो डिस्कशंस आ रहा है कि बताओ जी हमें क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, वी डोंट अंडरस्टैंड आयुर्वेद, मगर वी थिंक देयर इज समथिंग देयर, इसके अंदर कुछ है। सो प्लीज इंस्ट्रक्ट अस कि क्या करें, क्या कैसे सोचें, हमारे पास इतने पेशेंट्स है। तो उस टाइप का डिस्कशन अब पवन जी के साथ करेंगे जी थोड़ा काम, ये जो, और आपकी भी हेल्प लेंगे थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। भार्गव जी देखिए, डॉक्टर पवन अगर वो कहना चाहें, डॉक्टर भार्गव जी उनको देखिए, अगर वो कुछ कहना चाहें तो पारिक मैडम, और नहीं तो फिर हमारे वैद्य पटंकर जी हैं। डॉक्टर पारिक मैडम, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पारिक मैडम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस अबाउट द कार्सिनोमा एंड देयर ट्रीटमेंट। हाँ जी सर, मेरे को भी एक अनुभव हुआ आप सभी के अनुभव सुन करके, और मुझे अपना अनुभव याद आ गया। वेलकम मैडम। हाँ सर, काफी साल पहले की बात है, करीब 10-15 साल पहले। तो पेशेंट मेरे पास आया था स्पेशली कि मेरे को वॉमिटिंग हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हजम नहीं हो रहा है। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसने मुझे बताया कि बड़ी आंत में 3-4 किलो की गांठ निकली थी। उसका जब टेस्टिंग करवाया
तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि आपके पूरे शरीर में फैल चुका है, मेटास्टेटिस कंडीशन आ चुकी थी, लीवर में उसके सिस्ट बन चुके थे। और दुर्लभ जी में ऑपरेशन करवा के और आई तो उसका जो वहां का डिस्चार्ज टिकट था उसमें मैंने देखा कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट दे रखा था। तो मैंने भी उसको सिर्फ एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना शुरू किया, सूखे का रस, प्रवाल पिष्टी, आरोग्य वर्धनी, गिलोय सत्व वगैरह। उससे उसको थोड़ा सा आराम मिला। और कहाँ तो वो पानी भी उसको हजम नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उसको पेय की स्थिति में जो मैं द्रव दे रही थी हजम होने लगा। उसके बाद में मैंने जब देखा कि उसको कैंसर है तो मैंने उसे घर वालों को समझाया कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं, बट ये चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है, तो क्यों ना हम जहाँ है अगर आगे नहीं बढ़ने दें तो वो भी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारे रोहिड़ा लीवर कैंसर पे अच्छा काम करता है, ये बात मुझे याद थी। तो मैंने उसे बताया कि आप रोहिड़े का छाल का क्वाथ बना करके रोजाना प्रयोग करें। औषधियां आयुर्वेदिक जितनी भी दी मैंने लीवर पे काम करने वाली ही दी। कालमेघ और चिरायता भी बीच बीच में मैंने यूज में किया। उससे वो लेडी जिसको डॉक्टर्स ने 6 महीने के अंदर दे रखा था जवाब कि 6 महीने से ज्यादा ये जीवित नहीं रहेगी, उसके पेरेंट्स भी सब इसी बात से चिंतित थे। और वो लेडी धीरे धीरे दलिया खाने लगी, दलिया के बाद वो फुलके खाने लगी, फुलके के बाद वो नॉर्मल डाइट सात्विक आहार ही लेती थी, तला भुना मैंने उसको चालू नहीं कर रखा था। और धीरे धीरे वो चल के अपने घर के सारे गृह कार्य करने लगी। और एक दिन उसने इच्छा जताई कि मैं वैष्णो देवी दर्शन करने जाना चाहती हूँ। उसके घर वाले रेडी नहीं थे। जब मैंने उससे कहा कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तो मैं खाने पीने का परहेज कैसे करूंगी। मैंने कहा तुम्हारे जितने भी क्वाथ द्रव्य हैं तुम ले जाओ, होटल पे चाय बनवाती हो उसकी जगह क्वाथ बनवा लेना, बाकी मेडिसिन तुम तुम्हारी तैयार करके रख लो। रास्ते में ट्रेन के अंदर तुम दलिया वगैरह नहीं खा सकती, कोई बात नहीं, दलिया सेक के ले जाओ, कहीं पर भी जगह मिले वहां पानी उबाल के कह देना भी सिजा के दे दो। इस तरह तुम्हारा पथ्य परहेज टूटेगा नहीं और तुम आराम से जा सकती हो। वो लेडी गई और वहां से जब वो प्रसाद लाई, वो मेरे लिए सबसे बड़ी फीस थी कि ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये एक्सपीरियंस में आज सभी लोगों का सुन रही थी तो मैंने भी अपना शेयर किया। थैंक यू। शायद हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी है जी। महेश जी प्रणाम जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं कैंसर को मैं कैसे देखता हूँ या आपके सामने बता रहा हूँ। मैं कैंसर लाइफस्टाइल डिजीज है, बिल्कुल आपने शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। तो जो अपन दूषी विष, आम विष और गर विष, ये 3 तरह के विष होते हैं। ये तीनों ही विष शरीर में जिस स्रोतस में जाएंगे उसी स्रोतस का कैंसर उत्पन्न करेंगे। तो कैंसर कोई इनका स्रोतस अलग अलग हो सकता है, इनकी पैथोलॉजी एक ही अपने आयुर्वेद के हिसाब से। तो त्रिदोषज होते हैं, विष इसमें होता है तो प्रसरपण शीघ्र प्रसरपणशील होता है कैंसर विष के कारण से। तीनों विष इसमें होते हैं। इसमें आहार और विहार ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आहार भी आजकल सही नहीं है और विहार भी सही नहीं है। मिथ्याहार करते हैं, अति मात्रा में भोजन करते हैं, विरुद्ध भोजन करते हैं, अजीर्ण भोजन करते हैं, प्लस फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। इन सब से तीनों ही विष इकट्ठा होकर के जिस स्रोत में जाएंगे उसी स्रोत की व्याधि उत्पन्न कर देंगे। मेरा खुद का अपना सोचना है। और इसकी चिकित्सा के लिए पंचामृत, अपने शास्त्रों में पंचामृत की गणना आती है, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, शर्करा। ये पंचामृत का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है एलोपैथी के साथ साथ। तो ये रसायन के रूप में बहुत अच्छा काम करता है कीमो के दौरान भी। इसके अलावा ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, शिलाजतु, बल्लातक, हरिद्रा, आमलकी और अमृता, इनका कैंसर में बहुत अच्छा रोल है। मेरी पत्नी 2017 से सफरिंग कर रही है, अभी बिल्कुल ओके है। इसमें महेश जी आपने जो विष के बारे में जो बताया जी, इज वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया जी। हम तो लोग बाग तो आम और उस टाइप की चीज के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन। और दूसरी आपने जो बताया जी, जो स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस, स्पेशली रस औषधि, 3 रस औषधि है। हाँ जी, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म। इस महेश जी, these are very specialized areas। और एक और सोच हमारी तरफ से ये कि आयुर्वेद के अंदर थोड़ा सा वो स्पेशलाइजेशन ले आए जी। एमडी लेवल के बाद, हमारी एमडी लेवल के बाद थोड़ा सा वो स्पेशलाइजेशन की, some specialization for
particularly cancer या cardiovascular disease. वो modern medicine के साथ वो some specialization, because it's a very specialized areas. सर मैं इसमें माफी चाहता हूँ, आयुर्वेद को पढ़ने के लिए आयुर्वेद का चश्मा ही लगाना पड़ेगा उसमें। नहीं वो तो ठीक है जी, वो नहीं, we won't drift, we won't go away from the samhitas and tattvas and samhitas and shastra, we won't go away. मगर उसके अंदर वो जो कैंसर वाली इसकी इलाज के अंदर अगर जाना हो, वो कॉन्फिडेंस बनानी हो, we need the confidence. थोड़ा कॉन्फिडेंस आने चाहिए. It is not for everybody to use रस औषधि. वो कॉन्फिडेंस आने के लिए we need a critical mass जी. We need somewhere. वाले हैं सर, मेरा सर ये मानना है कि कैंसर कहीं का भी हो, उसका निदान, संप्राप्ति और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं स्रोत के हिसाब से, लेकिन निदान और संप्राप्ति एक ही है सबकी। थैंक यू महेश जी। आई विश आपके टेलीफोन नंबर अगर ले लें तो थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाएगा। जी सर, 9799 9799 हाँ जी 435 797 797। चलो जी सर, भाव प्रकाश में मृत्यु उपास छेदी घृत का एक वर्णन आता है। भाव प्रकाश में मृत्यु उपास छेदी घृत वो विष चिकित्सा के लिए बताया गया है। उसमें जांगम और उद्भिद दोनों की विष की चिकित्सा के लिए मृत्यु उपास छेदी घृत का वर्णन आता है। तो मैं सोचता हूँ उसका भी कैंसर में अच्छा रोल होना चाहिए। अपन अलग अलग स्रोत की अलग अलग चिकित्सा नहीं करेंगे, कैंसर की चिकित्सा करीब समान को स्रोत भिन्नता हो सकती है उसमें। वेरी नाइस, बढ़िया जी। इसके थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रहा डिस्कशन आज। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। विद योर काइंड परमिशन हम लोग अब इस कार्यक्रम की समाप्ति के आदेश चाहते हैं। 9:30 बज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपको नींद भी आ रही है? सर मैं 3 बजे उठता हूँ सुबह और 4 बजे तक सर्कुलेट करता हूँ, तो मेरे लिए रात 9:30 के बाद बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सही बात है सर, रेगुलर लाइफ है ना। सुबह उठ के सर्कुलेट नहीं करूंगा, डिजाइन नहीं बनाऊंगा। कल रेडियोग्राफी डे है, परसों उत्तराखंड डे है, परसों ही लीगल इश्यूज डे है, नर्सों एजुकेशन डे है। तो ये सब कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से चलते रहे, बस इतनी सी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 7 स्पीकर्स और 9 पैनल डिस्कशंस, इस मिला के ये पूर्णत्व को प्राप्त हुई वेबिनार। हालांकि वही कैंसर इतना बड़ा है तो अनंत है, तो आगे भी चर्चा चलती रहेगी। श्री सूक्त के 16 पाठ हुए सर। जी श्री सूक्त के 16